Assalamu alaikum, good evening. It's match number 12. And you can see the opener stride out to the center is Ahmed Umar Bande. We'll have to wait and watch who's going to be the next one to join him. And in the loving memory of Aja Sangha and JK Sports Time team is equally alongside their family in this moment of grief. We stand with the family of Aja Sangha, one of the remarkable wicketkeeper batters of Sopore town. He lost his life few days back, and from our side, may Allah bless him and may Allah provide him highest place in Jannah and Jannatul Firdaus. May Allah grant him highest place in Jannatul Firdaus. And this match will be played in the loving memory of Aja Sangha, and Sopore Stallions will dedicate this game and this tournament to Aja Sangha. In the loving memory of Aja Sangha, they're going to play the tournament. And from our side, from our team, we stand with the bereaved family. Our condolences are with the family. And also from the Red Premier League family and JK Sports Time together, we stand with the bereaved family. Our prayers are always there. May Allah bless him. May Allah grant him highest place in Jannatul Firdaus. He was a wonderful cricketer, and whenever he used to keep wickets and whenever he used to walk onto the field with bat, he was terrific. And believe me, he was such a wonderful player from Sopore town, from Apple town of Sopore. And this club will try to carry forward his legacy by bringing the young faces from Sopore area and the rest of the areas. And from our side and from Red Premier League family, we pray to Allah subhanahu wa ta'ala, may Allah grant him highest place in Jannah. And that's going to be highest tribute from our side, and thank you very much. And it's time for the game in the middle. The two openers, we got Ahmed Bande, one of the opener in the middle. Is it Fayaz Sarwar? On the other side, it looks like Fayaz Sarwar is the other batter in the middle. Spectrum Kings will have to bowl first as toss won by Sopore Stallions, and they decided to bat first under lights. They will try to put runs on the board. And talking about the two teams, they are evenly poised combination. Some of the big names, some of the heavyweights playing for Sopore Stallions. It's a star-studded side. The two brothers from Bijbihara town, Parvez Rasool and Asif Rasool, are going to be part of Sopore Stallions, and Parvez is going to lead the side as a captain, as a skipper. He is captaining Sopore Stallions in today's game, and throughout the tournament, he will be leading up front. And there is a short pause in play, and ball is handed to bowler. Now, Mohammad Mudassir will open the attack for Spectrum Kings. They are 2 down in the tournament. They lost 2 games on the trot. They will try to bounce back. It's a must-win game. If they win here, then they need to find a victory against Sultans to qualify. And back to the game. Talking about today's match, it's of huge importance. It's under lights. Match number 3 for today overall. 12th one. Welcome, Nazir. धन्यवाद. अस्सलाम वालेकुम. स्वागत आप सभी व्यूवर्स का जेके स्पोर्ट्स टाइम ऑफिशियल फेसबुक यूट्यूब, जेके स्पोर्ट्स यूट्यूब के अलावा रेड एफएम जेके यूट्यूब के माध्यम से सोपोर स्टैलियंस टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय, लेट्स प्ले का निर्णय, और ऐसे में पहली गेंद लेकर के हालांकि अहमद उमर बांडे ने कदम अपने चूके जरूर गेंदबाज मुदस्सिर ने वापस डेड बॉल का इशारा, वापस लौटना पड़ेगा. अहमद उमर बांडे और फयाज सरवर, ये है प्रारंभिक जोड़ी सोपोर स्टैलियंस का. ये पहला मुकाबला जेके सुपर सीनियर रेड प्रीमियर लीग 2025 सेकंड एडिशन प्रेजेंटेड बाय अथवास. सामने है स्पेक्ट्रम किंग्स. 2 मुकाबले खेले हैं, दोनों में हार का सामना करना पड़ा. तीसरा मुकाबला उनका और पहला मुकाबला सोपोर स्टैलियंस का. अहमद बांडे सामने, मोहम्मद मुदस्सिर शुरुआत करते हैं पहली गेंद लेकर के बांडे के लिए, और भारत चार्ज ड्रॉ गैप में खूबसूरती के साथ गेंद को निकाल दिया सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए. चौका मिलता हुआ शुरुआत चौके से अहमद उमर बांडे की, और शुरुआत सोपोर स्टैलियंस की चौके से 4 बगैर नुकसान के. सोपोर स्टैलियंस के पास अच्छी खासी बल्लेबाजी और एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन लेकर के सोपोर स्टैलियंस की टीम उतरी है. अहमद बांडे और फयाज सरवर को शुरुआत में भेजा है, हालांकि आसिफ रसूल टीम का हिस्सा है, परवेज रसूल टीम का हिस्सा है, और उसके अलावा अन्य दीगर खिलाड़ियों में आसिफ रमज़ान सबअफ्ते टीम का हिस्सा, और कुछ अन्य दीगर खिलाड़ियों को भी जगह मिली है. तो एक बेहतरीन और शानदार आदिल कासरू टीम का हिस्सा है. तो बेहतरीन कॉम्बिनेशन लेकर के उतरे 4 बगैर नुकसान के. लेग स्टंप पर और खूबसूरती के साथ सीधे वहां स्टैंड्स में एक और छक्का. पहली गेंद पर चौका, दूसरी पे छक्का. ये अहमद बांडे ने शुरुआत कर दिया है सोपोर स्टैलियंस के लिए, और ऐसे में 10 रन बने हैं बगैर नुकसान के. आक्रमण किया है, लेग स्टंप पर थोड़ी सी दिशाहीन गेंद थी, खूबसूरती के साथ प्ले किया. कलाइयों के दम पे हवाई यात्रा पे गेंद को भेजा और इस प्रकार से 6 रन और अर्जित किए.
6 रन के साथ ही रन संख्या 10 पर पहुंची एक विस्फोटक अनुभवी खिलाड़ी अहमद उमर पांडे। और दूसरी ओर अगर गेंदबाजी की बात करें तो मुदस्सिर भी एक अनुभवी गेंदबाज है। ये अच्छी गेंद थी, अच्छी वापसी, मिडिल स्टंप पे आ रही थी गेंद, सम्मान दिया अहमद पांडे ने। जानते हैं एक अच्छी शुरुआत देनी है, पर उनके बाद आप जरा से भी दिशा से भटकेंगे तो निश्चित तौर पे परिणाम जो है वो यही होगा। बड़े स्ट्रोक्स के साथ आपको खमियाजा भुगतना होगा। अहमद पांडे और फयाज सरवर बीच मैदान में 10 बगैर नुकसान के सोपोर स्टैलियंस। Look at that shot, and can we have the replay later on? But that was a technically sound. That one is over backward a point. Field in pursuit, can't get to the ball. That's 4. And that's gone all the way. Has that carried? It looks like that's gone all the way for a 6. 6 number 2 of over number 1. The first one I saw, that was a quality boundary through covers, extra cover drive, or the cover drive. Then the next one, that was the flick. The next one, look at that one. Square driven, over backward a point. Has that carried all the way? Has that? Yes, it has. It's the biggest of the lot on that portion. So 2 6s and a 4. 16 already of it. Mohammad Mudassir was bowling at a good pace, but look at the technically sound batter. Today he looks in different nick and touch. That on drive, that was glorious and gorgeous. And then over the backward a point, this time trying to flick it. Shot for LBW. So there is no problem at all. It's clearly going down leg. Called as leg by 17 from 5 balls. This over Ahmed Umar Bande, cover drive, scare drive, then a flick of the wrist. 3 shots straight away in the very first over, using the pace of Mohammad Mudassir to perfection. And Sarwar will face the likes of Mohammad Mudassir. What can he do on this surface? It looked good for batting. We saw 16 coming of just 3 balls. And it's the last ball of over. And Sarwar works it away, scare on the on. And he will keep the strike. 1 done. 18 for none. Sopore Stallions in Red Premier League. It's their match 1 overall. It's match number 12. The 2 openers in the middle. It's Sarwar and he's got Ahmed Umar Bande. Technically sound batters. The technique is going to be there. Form. They are carrying a good form. And when we talk of the class, that is something that is eternal. Class is permanent. And these 2 are classy batters. Class is permanent as the word goes on, as the sentence goes on. And these words are clarified by this lad Ahmed Umar Bande in the very first over. With that cover drive, then the flick of the wrist on drive, then that scare driven over backward a point. Some of the quality shots displayed in the very first over. The techniques and the technicality, talking about the lad Ahmed Umar Bande, who has shown those glimpses straight away. And everyone would love to see those shots time and again. And later on you can wait for these glimpses again. Late tonight you can watch on JK Sports Time. And moreover on JK Sports Time YouTube and Red FM JK channel, where you can have the replays and the highlights. You can find out how he met with the leather. The connection was supreme. It was golden touch in the very first over. It's going to be Mohammad to operate. Mohammad. It is still displaying Mohammad Mudassir on a scorecard there. Yet to update. Now it is Jaitrag who's got that kind of a band on his head. I used it to see there were a couple of bowlers who used it to put on that hairband, and he's got that band on his head here. Jaitrag. He will bowl for the first time in today's match from Southern Pavilion, and first ball slashes hard. Couple of bounces into the point boundary for 4. Straight away, signs of intent. Fayaz Sarwar skips down the track and rises again. Stand a stall, comes up with a 4. That is a glorious shot onto the front foot. Take a look again. Jaitrag, who's bowling at tremendous pace, but that was a wayward one. And Fayaz Sarwar, he's loving that length. He's loving that bounce. And it was on the rise and he slashes it hard. 22 for none. In second over. Here is Trug again. And this time Sarwar trying to drive the ball on up. And look, Ahmed is telling him, oh Sarwar, you have to bend your knees a bit. Keep head still. You can't do this. Oh, just like that. Now he's trying to shadow practice that shot. He has to bend a little bit like this. Or the other one, he was just trying to do that. And this is how you need to go after a Trug-like bowler when you are trying to keep it in that V. Mid-on and mid-off area. This time wraps him on pad. No problem there. He's going to scamper through, and Ahmed Bande, he's a pace lover. A batter of
highly techniques and the temperament is there. This lad has played in county division, a second in England, scoring 575 runs that season and picking up 25 wickets. That's history now, but he has been the part of that where cricket got its birth, and he was the part of that event there. One thing to surprise me, why he decided to be back to the valley, 23 for none. Gone are the days when he was on top, when he used to crack each and every ball on offside and equally on onside. He used to stand tall, 23 for none. The second over, Jaitrag. He's gone for 5. Silver 1. But it's a wide delivery. It's down the leg side. He was trying to flick it round the corner. Trug took pace off the ball. He's got tremendous pace. And he's going to fire in again and again. But this one, he mixed it up. The good sign of a bowler, when you feel that batters are loving pace, they're just trying to use my pace. You have to do this thing and shorten the length, take pace off. This is good sign from Jahid Rug. This time Ahmed keeps that one in the gap again, down to the cock-on area. That's going to be runs again, 4 more. And something to cheer, not just something. The only highlights as of now, thus far in the game, it's all about Sopore Stallions, the captain, Parvez Rasool, the international icon, the only international player from this province who represented country at highest level and played cricket alongside some of the big names of international cricket. He has played alongside Steve Smith and some of the other big guns. And once he got the wicket of Steve Smith, it's 28 for none in that practice game. 1.4, 28 for none. Here is Jahid again. Does well this time. And equally, batter is there. He's got eyes on the ball. This is superb cricket from Ahmed Umar Bande and Fayaz Sarwar. Entered shown by Bande, but they were quality shots against Mohammad Mudassir in the second over. Both the batters are trying to stay calm as the bowler is doing in his own fashion. He's mixing it up. He's going with the pace in between, taking pace off, shortening the length, trying to go with that lower trajectory. 29 for none. And this time it's up and over the man at mid-off. Gonna be runs again, 4 of them. Another boundary on to 33 after 2 overs. And look at that one. He rises to the occasion. He comes down the track on the rise and he dispatched it. Oh, look at that shot. That is server for you. Kills the man at mid-off with ease. Once you kill that, you're gonna get more than 1. He gets 4 for that. 2 gone. The Stallions are 33. They are off to a flyer, a rapid start. 2 ओवर की गेंदबाजी हुई है. पहले ओवर में 18 है, इस ओवर में 15. काफ़ी खर्चीले 2 ओवर गए हैं अब तक स्पेक्ट्रम किंग्स के गेंदबाजों द्वारा. और सोपोर स्टैलियंस ने यहाँ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते इस 12वें मुकाबले में उनका पहला मुकाबला है. 33 रन बना लिए हैं. 16.50 प्रति ओवर के हिसाब से जो प्रोजेक्टेड स्कोर वो 330. और इस समय प्रोजेक्टेड स्कोर का अगर नज़र दौड़ाई जाए, और यह क्रिकेट महान चिंताओं का खेल है. कुछ भी संभव है जब तक ना आखिरी गेंद फेंकी जाए. पर यहाँ अहमद बांडे जो कि एक बेहतरीन अनुभवी खिलाड़ी है, लंबा अनुभव है उनके पास, बेहतरीन क्रिकेट वो खेल चुके हैं. और ऐसे में फयाज सरवर की अगर हम बात करें तो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली और वो भी एक अनुभवी खिलाड़ी हैं. तो एक परफेक्ट स्टार्ट यहाँ पर मिलता हुआ. 2 ओवर में 33 तेज तरार आक्रमण किए हैं. और कुछ संदेश बारज़ अयूब नज़र आ रहे हैं संभवतः. और अहमद बांडे के पास पहुंचे एक संदेश और वो वाटर बोतल भी लेकर के, और संभवतः वहाँ ग्लोव्स भी बदले गए हैं. और अब जा करके अहमद बांडे हालांकि काफ़ी बेहतरीन खिलाड़ी हैं. सोपोर स्टालियंस की बात करें तो एक बेहतर कॉम्बिनेशन लेकर के उतरे पहले मुकाबले में, और मैं समझता हूँ उनकी मैनेजमेंट बहुत बेहतर निर्णय लिया है. क्योंकि शुरुआत में अगर आप बेहतर इंपैक्ट डालते हैं, पहले ही मुकाबले में जीत अर्जित करते हैं, ये कोई मायने नहीं रखता. आपके सामने स्पेक्ट्रम है, आपके सामने सुल्तान है, आपके सामने गुडविल है, पर क्रिकेट क्रिकेट है और क्रिकेट सबसे ऊंचे स्तर पर है. तो आप शुरुआत किस प्रकार से करते हैं, एक अच्छा कॉम्बिनेशन लेकर के उतरी है यहाँ पर सोपोर स्टालियंस, जहां अहमद बांडे, उसके अलावा फयाज सरवर, आदिल काचरू टीम का हिस्सा है, परवेज रसूल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट आसिफ रसूल टीम का हिस्सा है. और उनके अलावा अगर हम बात करें तो आपके पास कुछ अन्य दीगर भी बेहतरीन टीम लेकर के तौसीफ रमज़ान संभव थे अथवा आसिफ रमज़ान टीम का हिस्सा,
आसिफ रमज़ान टीम का हिस्सा हैं, तो आपके पास एक बेहतरीन बल्लेबाजी लाइनअप है और मैं समझता हूँ एक बहुत ही बेहतरीन बुद्धिमानी का परिचय दिया है सोपोर स्टालियन ने। वहीं पे स्पेक्ट्रम की बात करें, पिछले 2 मुकाबले उन्होंने हारे हैं, थोड़ा मनोबल ज़रूर नीचा होगा पर वापसी करनी होगी। ओवेस शाह एक और परिवर्तन गेंदबाजी में, और अनुभवी खिलाड़ी ओवेस शाह भी, हालांकि एलिगेंट स्ट्राइकर्स के साथ तो अच्छा ज़्यादा क्रिकेट खेल चुका है। और यहाँ पहली गेंद पर बड़ा प्रहार पर पीछे फील्डर हैं, और यहाँ कैच संभवतः ड्रॉप हुआ। और निश्चित तौर पे जब आप इस प्रकार की फील्डिंग करेंगे, वो भी अहमद बांडे और फयाज सरवर जैसे खिलाड़ी, और उनको जीवन दान देंगे, अवसर वहाँ पर देंगे, तो फिर काफ़ी घातक साबित हो सकते हैं। फिलहाल 23 पे 8 गेंदों से अहमद उमर पांडे, फयाज सरवर 10-5 गेंदों से 35, 2.1 ओवर की गेंदबाजी। ओवेस शाह पहला ओवर लेकर के तीसरे गेंदबाज का चयन। शुरुआत में तेज गेंदबाजों से शुरुआत करवाई थी, बाएं हाथ से ये गेंद इस बार लेग स्टंप की शेप में ये गेंद थी, लेगो मिडल स्टंप पे सम्मान दिया वापस बॉलर की दिशा में। रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं, रन संख्या की अगर हम बात करें अभी भी 35। हालांकि अब तक इस ओवर में 2 रन आए हैं 2 गेंदों से। पहले ओवर में 18 आए थे मुदस्सिर के, दूसरे ओवर में जाहिद तराक का इस्तेमाल किया, उन्होंने 15 खर्चे, और ये 30 ओवर की गेंद। बस यहाँ एक विकेट चाहिए आपको, विकेट टू विकेट गेंदबाजी करनी है, सही दिशा और लंबाई के साथ नियंत्रण करना है, फिर लेग स्टंप की शेप में दिशा इन गेंद गैप में गेंद को खेला है, ये 4 दे के जाएगी सीमा रेखा से बाहर, चौका मिलता हुआ। अब सही दिशा और लंबाई की हम बात करें, थोड़ा नियंत्रण करें और बेहतर तरीके से गेंदबाजी करें, तो फिर आप दबाव बना सकते हैं। अगर आप इस प्रकार की गेंदबाजी करें, अवसर मिलेगा बल्लेबाज को सेट होने का। And it looks like they're already set in the middle. Ahmed Bande, that catch gone down. Fielding unit looks unsettled a bit. Mohammad Mudassir and Evesha, the 2 stars were the former state players. Now they need to regroup again and tell these young lads, don't worry at all. We can still make a comeback. But they're unable to do so. Look at that. The technique of the batter, that is elegant, that is pristine. He's so wonderful there. He's using that elegance. And talking about this lad, what we talk, he himself is here to describe. He's going with a descriptive mood at the moment. He's unfolding and he's unleashing all the shots from cricketing book. That one, it's high up in there. Who's going to take this? Is he in danger here? Oh, he was very much in danger, but it landed in no man's space. It falls in no man's land. And Evesha isn't happy at all. These young lads need to understand how to play under lights. But credit to Owas Jilani, the man behind this club, Spectrum Kings Cricket Club, bringing in young blood, bringing in young generation, younger generation. Some of the big names added to the fold today for this big game. Evesha, Mohammad Mudassir was already there from game 1. And Jahid Trug comes in today. And he need to tell these lads, they need to regroup again and get together, have a solid conversation. And there was a chance, and this time it's gone down again. And Ovesha has hurt his left hand there, because Bande has got that bat, and the technique is of next level. The speed it generates, look, he's in deep hand. It's just like that, ouch. His left hand caught that the kind of injury it looks like. Look, it was a lower bounce on offer. It stays a touch low. But look at Ahmed Bande, the way he's playing shots. There is always that pace behind the shot, and every shot looks, it has got that terrific pace behind the ball, and all the shots looked going off in no time, in a nick of time. And if you are asked to explain, I can use in a blink of an eye, because the way he's generating that pace and the shots were so nice. Yeah, he got a lifeline, and there was another miss hit to me that didn't go a long way. He was lucky now there is going to be physio out on the field, because Ovesha needs some attention. Is he going to continue to bowl? As he's done with this one, he bowled 1 over none for 10. He has hurt himself badly there. Owas Jilani is playing today's match, the owner. That's the good sign. He has got that passion for the game, the love for the game. Brought in some of the young guys
to me, if you ask me, and I'm gonna throw it out what I saw, those glimpses in these young lads, going to be future stars in making. What remains to be seen, who are going to be the owners and who are going to be the sponsors to back these young lads so that they can improve their game, they can hone up the latest techniques, and who can reshape their career and tell them that you have this technique, it needs to be groomed so that they can come up with something special and they get inspired. The young generation needs to be carried off, and let's see which one will take care of these young lads. Even West Gilani told me that there were multiple calls that we want to sponsor Umar Zuhur. He's the part of this side, and there are some of the young guys. He's coming with a local unit and has one or two big names in the lineup, that's for sure. But talking about other 9 guys, they are the young lads, lesser known to the world in the age of social media, but there are going to be the moments, the time is going to be theirs, and they will have their time, inshallah, when they will rise to the occasion. People will praise them and they will be the talk of town, and there is going to be serious discussion that I saw this lad who batted like a champion, I saw the bowler who was variating, who was getting that drift and who was turning it up the air and up the surface, who was swinging it, who was reversing it. And these things are going to come into play, believe me, in near future. But we need to take care of this young generation, and we have to put money on these young lads and capitalize it cautiously on these lads. Down the leg side, gonna be runs again, and that's 4. Bad delivery from Mohammad Mudassir, legendary bowler, once stateside. They were pretty much dependent on this lad, and he was Mr. Dependable with pace, and they used to use this lad up front with the new ball. But nowadays we have Akib and others in the lineup in that pack. But talking of this lad, Mohammad Mudassir, he has played that basic level cricket. Here's pack 47 for none. The next one, server keeps it away. 47 for no loss, as we are in over number 4. There is Fazullah Dar, another talented spinner, left arm spinner. He has a 5-wicket haul once in the tournament under his belt. He has picked up 5 wickets, 5th in the tournament. That's an achievement, that too against a big team. 47 without loss. Digs it out again, not for runs. Mudassir need to dry up runs here. Server will try to find the gap. He's going to look for gaps here. There is something going on with his bat. He's having some issues. Is it okay? And he was just checking it. Now Bande almost walked up and asked him, no, it looks fine. It looks okay now. I'm going to carry on and continue. Wraps him on pad. Shot for LBW and a stand down. The beauty of coming forward onto the front foot. And he's ending up that angle, and he's trying to distract the bowler for a while, and bowler is going to try with something new here. Good ploy to use. Showing intent. Showing aggression that I'm here to hit the ball. And sometimes a bowler is going to adjust when he sees the batter coming down the track. He's batting already out of crease. Look at that one again. He was trying to smoke it away. He's batting almost 11 centimeters around that outside crease and still decided to go downtown. There is no fear of pace. And there was a time batters feared pace because sometimes it makes the batter race. But not this time. He was 11 centimeters out of crease, then decided to skip down the track. 48 for none. And that one, aerial in the gap. Gonna be runs again. Gonna be 4. Nicely done again. Pulled to perfection. That's 50 up for Sopore Stallions. Winning the toss of batting first. Watch this again.
Yes, pulled and pulled well. And that's Bande for you. That's Ahmed Umar Bande for you. And you can use the word Bande, you beauty. Moves to 35-14. And Fayaz server. Another attacking batter is on to 15 of 10 balls. Bande is trying to keep the strike. And if he continues like this, it won't be easy to stop Bande. Yeah, there is one problem. That's going to be in equation. Sometimes he gets overcautious. We have seen that. But the flow of the bat is going to be there. He wants to score runs. He has that hunger for score. He wants to score runs. He wants to score big. Can he convert today's start into a substantial one? He's got to start now. Now he has to make it big. One massive here. 52 for none. It took just 4 overs to get there. Stallions, that's Apishan aerial. But he knows that it's going to be safe. So no problem at all. One more run added. 53 for none. Sopore Stallions dedicated this tournament and today's game to late Ijaz Sangha, the young cricketer we lost few days back. May Allah grant him highest place in Jannah. 53 for none. That one, aerial and Apish over the man at short mid-on area. This one is gonna run down to the boundary. And that's 4 again. These boundaries will put huge amount of pressure on fielding unit. And Evesha, what can he do now? Look at that shot, on driven again. Aerial he goes. Not gonna keep it down. This one, it stays touch low. Otherwise, he was eyeing over covers this time. Evesha is playing for Spectrum Kings Cricket Club. There is Mudassir Molvi in the lineup. Mohammad Mudassir. There is Jahid Trag and other young lads. There are other young lads in the lineup like Umar Zuhur, Fazullah Dar. And these young lads will learn the lesson with the passage of time, playing this tournament on a big stage. That's down the leg side. Gonna be wide. It's 58 for none. He wided that one. 58 with a loss. This is 5th over we are in. Little attendance. But Sopore has brought a great combination. There is a chance. He dropped again. And Bande is put down again. This is another silly mistake there. Should have been taken. Well, you can't afford like this. You can't drop chance after chance. Once again, Ovasha is the bowler. He's a bit unlucky. Scare cut. Plays it onto the onside, down to the mid-on area. 58 for none. 59 for none. We are in over number 5. We're done with the 5th one in Ovesha. Bit unlucky customer here. Bit unlucky bowler this evening. 7 from this. 2 was gone for 17. He had Bande earlier on. It is bit unlucky. And it's been a tough luck for Ovesha. 59 for none after 5 overs. And that means 15 overs remaining. Mohammad Mudassir has got the ball in his hand again. I think Mudassir has that responsibility. He need to take that responsibility. He has to teach others how to be at your best. Because he's the master of these situations. He knows how to calm the situation, how to control the bat flow. 5 ओवर की समाप्ति 59. फयाज सरवर 16, अहमद उमर पांडे 40. ओवेशा ने 2 में 17 दिए हैं और मोहम्मद मुदस्सिर ने 2 में 26. पहली गेंद खूबसूरती के साथ, कोई मौका नहीं. बेहतरीन स्ट्रोक उमर पांडे के बल्ले से. और यहाँ पर चौका मिलता हुआ 4 और खाते में. 4 रनों के साथ रन संख्या में वृद्धि हुई. 44 पर व्यक्तिगत योग इस समय अहमद उमर पांडे का मुदस्सिर के विरुद्ध. और जैसे ही गेंद थोड़ा ऑफ स्टंप के आसपास आक्रमण था, मिडिल ऑफ स्टंप पर खूबसूरती के साथ उतना समय मिल गया बल्लेबाज को. और बहुत ही बेहतरीन कला है इस खिलाड़ी के पास. अहमद उमर पांडे 44 पे 20 गेंदों से 63 बगैर नुकसान के 5.1 ओवर की गेंदबाजी. मुदस्सिर ने 30 रन खर्चे. अनुभवी गेंदबाज है पर यहाँ कोई खास प्रभाव नहीं छोड़े. सामने सीधे बल्ले से
लॉन्ग ऑन की ओर खेला है पीछे फील्डर, पर जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो करते समय दोनों बल्लेबाजों के पास कुछ रन लेने का, और 2 रन और संभवतः रन संख्या में वृद्धि। ये 65 तक पहुंच चुके सोपोर स्टैलियंस। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करती पहला मुकाबला जेके सुपर सीनियर रेड प्रीमियर लीग 2025 सेकंड एडिशन प्रेजेंटेड बाय एथवास और सोपोर स्टैलियन की शुरुआत इस प्रतियोगिता में, इस पहले मुकाबले से स्पेक्ट्रम किंग्स के विरुद्ध अच्छी शुरुआत मिली है आज इस पहले मुकाबले में जब बल्लेबाजी का अवसर मिला है। एक और बेहतरीन खूबसूरत आकर्षक स्टैंड्स में एक और छक्का, अहमद बांडे का अर्धशतक पूरा होता हुआ। कमाल की बल्लेबाजी, लाजवाब दर्शनीय प्रदर्शन आज उनके बल्ले से। क्या शानदार प्रदर्शन, 52 पे नाबाद हैं अहमद बांडे। बेहतरीन अर्धशतक अपने पहले ही मुकाबले में, 22 गेंदों से 6 चौके 3 छक्के, 236.36 का स्ट्राइक रेट। कमाल की ये बल्लेबाजी, विस्फोटक बल्लेबाजी अहमद उमर बांडे द्वारा। 52 पे नाबाद, 71 बगैर नुकसान के सोपोर स्टैलियंस। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, फिर पुल किया, फिर गेंद से रेखा से बाहर, एक और छक्का। लगातार छक्कों और चौकों की बरसात अहमद उमर बांडे के बल्ले से, और वो भी अनुभवी गेंदबाज मोहम्मद मुदस्सिर जो कि स्पेक्ट्रम के सबसे अनुभवी खिलाड़ी हैं, और उनके वो कड़े प्रहार। ये देख लीजिए, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद जरूर थी, पुल किया खूबसूरती के साथ अहमद बांडे ने, और 6 रन और अर्जित किया अपनी टीम के लिए। कमाल का प्रदर्शन, विस्फोटक अंदाज, विस्फोटक बल्लेबाजी अहमद बांडे, और सहयोग पूरा मिलता हुआ फैयाज सरवर द्वारा। 58 पे मात्र 23 गेंदों से अहमद बांडे, फैयाज सरवर 16-11 गेंदों से 77 बगैर नुकसान के। ये पहला पावर प्ले, अभी भी 2 गेंदों का आना बाकी, 13.59 का करंट रन रेट। इस बार सम्मान दिया, ऑफ स्टंप पर थी, ये थोड़ी नीचे रहती हुई गेंद सीधे बल्ले से सामने की ओर खेला और गेंद को फील्ड कर लिया गया, पर रन संख्या पे कोई वृद्धि नहीं। पर जिक्र कर रहे थे कि जिस प्रकार की शुरुआत सेट होने में थोड़ा सा समय लिया और उसके बाद आक्रमण, हालांकि शुरुआत से ही आक्रमण किया और ऐसा लगा कि जैसे डगआउट से ही सेट होकर के अहमद बांडे आए हैं। फैयाज सरवर ने सहयोग निभाया दूसरे चोट से, 264 प्रोजेक्टेड स्कोर इसी रन गति से 77। इस बार खेला जरूर, मिड ऑफ पे खिलाड़ी तैनात, सिंगल नहीं मिलेगा, और ऐसे में ओवर के भी यहां संभवतः समाप्ति। 3 ओवर में 44 मोहम्मद मुदस्सिर द्वारा काफी खर्चीले साबित हुए हैं। करीब करीब 15 के आसपास उनका इकॉनमी रहा है, 15 रन के आसपास उन्होंने 14.73 प्रति ओवर के हिसाब से रन खर्चे हैं। कमाल के स्ट्रोक, बेहतरीन बल्लेबाजी, आक्रमण किया, प्रहार किया, सामने भी खेले, स्क्वायर ऑफ द विकेट भी खेले, और क्या शानदार बल्लेबाजी अहमद उमर बांडे द्वारा सोपोर स्टालियंस के लिए आज शुरुआत में ही, और रंग में दिखे और अभी भी अभिजीत हैं। और पावर प्ले की समाप्ति हो चुकी है। 6 ओवर जो पहला बैटिंग पावर प्ले अनिवार्य रहता है, और उस पावर प्ले में 77 रन बना लिया है सोपोर स्टालियंस ने स्पेक्ट्रम किंग्स क्रिकेट क्लब के विरुद्ध। 12.83 प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाए, 257 प्रोजेक्टेड स्कोर। फिर यहाँ वापसी करनी होगी विकेट की तलाश, हालांकि कुछ अनुभवी खिलाड़ी है और कुछ ऐसे खिलाड़ी जिनके पास उतना अनुभव नहीं है, कुछ यंगस्टर्स को शामिल किया गया है स्पेक्ट्रम द्वारा। पर यहाँ मनोबल बढ़ाना होगा, सीनियर्स द्वारा आत्मविश्वास देना होगा, अच्छी गेंदबाजी सही दिशा और लंबाई के साथ। हालांकि फैजुल्ला डार एक अच्छे गेंदबाज हैं, उसके अलावा कुछ अन्य दीगर गेंदबाज, तो आपके पास विकल्प है, पर बेहतर तरीके से यहाँ गेंदबाजी करनी होगी। स्पेक्ट्रम किंग्स के गेंदबाजों की प्रशंसा करनी होगी, और थोड़ा आत्मविश्वास, संयम रखें और संयम के साथ बल्लेबाजी करें। इस समय 6 ओवर की गेंदबाजी में 77 रन बने हैं, 77 बगैर नुकसान के। पहले विकेट की तलाश यहाँ पे स्पेक्ट्रम किंग्स को, लेकिन अभी तक वो सफलता नहीं मिली है। और पहले विकेट की तलाश, वो पहले विकेट के लिए जूझ रहे हैं यहाँ पर अभी तक सफलता नहीं मिली है। नए ओवर की शुरुआत, पारी का 7वां ओवर प्रारंभ होने जा रहा है। 77 ओवेश शाह, 2 ओवर 17 रन। ओवेश शाह ने अनुशासन दिखाया, 8.50 प्रति ओवर के हिसाब से रन बने हैं। उनके विरुद्ध फैयाज सरवर सामने 16 पे 77, 6 के बाद 7वें की शुरुआत। ऑफ स्टंप से बाहर, स्टंप्स को कवर किया, 2 खिलाड़ियों के बीच में गैप में गेंद सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों के लिए। एक और खूबसूरत स्ट्रोक, और इस चौके के साथ रन संख्या 81, 6.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद
क्या लाजवाब बल्लेबाजी, निडर होकर के इस समय क्रिकेट खेल रहे हैं ये दोनों बल्लेबाज। बल्लेबाजी कमाल के, फैयाज सरवर द्वारा ये चौका और बेहतरीन स्ट्रोक, खूबसूरत प्लेसमेंट, बहुत बढ़िया, और 4 रन बटोर लिए अपने लिए और अपनी टीम सोपोर स्टैलियंस के लिए। 81 मात्र 6.1 ओवर की गेंदबाजी में तो आप कल्पना कर सकते हैं क्या विस्फोट क्या है। इस बार कलाइयों के दम पर फ्लिक किया, 1 रन जरूर मिल जाएगा। अहमद बांडे अब सामने होंगे, रन संख्या में वृद्धि 81 से बढ़कर 82। 6.2 ओवर की गेंदबाजी में 82। ओवेस शाह 22 रन। तो किसी भी गेंदबाज ने कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ा है उमर बांडे और उनके साथ फयाज सरवर पे। और एक अच्छी रणनीति है क्योंकि जो आने वाले बल्लेबाज होंगे वो मध्य क्रम जो होगा, मिडिल ऑर्डर जो होगा, उस पर किसी प्रकार का दबाव नहीं होगा, वो खुलकर बल्लेबाजी कर सकते हैं। पर ये क्रिकेट महानिश्चिंताओं का खेल है। फिर फंबल हुआ, ये दबाव साफ सा लगता हुआ जाहिद तराग ने आकर के गेंद को फील्ड किया, पर रन संख्या में वृद्धि होती हुई 7वां ओवर। सोपोर स्टैलियंस की टीम एक बड़े विशाल लक्ष्य की ओर अग्रसर होती हुई नजर आ रही है इस पहले सत्र में। 7वें ओवर की गेंदबाजी, 83 रन। सोपोर स्टैलियंस सरवर और अहमद बांडे बहुत ही बेहतर बल्लेबाजी कर रहे, एक और सिंगल चुरा लिया। अच्छी रणनीति, अच्छी मानसिकता और खूबसूरती के साथ बड़े स्ट्रोक भी खेले हैं। सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट किया है, 1 को 2 में कन्वर्ट किया है। तो कुल मिलाकर बेहतरीन बल्लेबाजी अहमद बांडे और फयाज सरवर ने। अहमद बांडे 59 पे, फयाज सरवर 22 पे 84। एक विकेट की तलाश। ओवेस शाह गेंदबाजी 3रे ओवर में, क्या विकेट मिल पाएगा अथवा नहीं ये देखना होगा। 1 विकेट चाहिए यहां से, अवश्य चाहिए। स्पेक्ट्रम्स के गेंदबाज जूझ रहे हैं उस पहले विकेट के लिए, पर अभी तक वो सफलता नहीं मिली है। रन संख्या इस समय 84 तक पहुंच चुकी है, 1 रन और खाते में तो 85। 1 गेंद का आना बाकी इस ओवर में। 22 पे सामने फयाज सरवर, 60 रन बनाए हैं अहमद उमर बांडे ने। फयाज सरवर और अहमद उमर बांडे, ये प्रारंभिक जोड़ी एक बार फिर खूबसूरती के साथ को खेला जरूर था, पर सीधे फील्डर के पास मोहम्मद मुदस्सिर ने गेंद को फील्ड कर लिया। रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं, 7 समाप्त। सोपोर स्टैलियन 85 बगैर नुकसान के। Unhurt, unscathed, and they are right on top at the moment. 85 for none. Fayaz Sarwar and Ahmed Bande. Bande a bit lucky, but has put on a show here. He lit up Central literally at Bakshi Stadium this evening. And this game is going to carry on late tonight, late into the night. It's a long way to go. 13 overs are going to come from inning number 1, and then it's going to be 20 overs more to come in the second innings. Overall 27 overs remaining. Current rate 12.14 an over. That's good. That's nice at the moment. Uvesha 25 is 3. There is a change in the bowling. And captain has brought in another spinner here. And this is going to be the spinner to operate from Amenity Block 5, Southern Pavilion End. Left arm, Imtiaz Ahmed, first ball. There is a fumble by Mohammad Mudassir, which yielded a single. Talking about the fielding unit, sloppy, sluggish at times, laziness we have seen. And fielders need to back their bowlers. It's their responsibility. They need to dry up singles. Conceding runs like this will never help the bowlers to weave that a kind of magic and web around the batters. There was a huge turn and offer, and Bande having a word with umpire there, and Bande believes that was wide of the off, but he says that it's within the marker, so no problem with that one. As Imtiaz Ahmed in his very first over is another experienced lad. He's playing for Spectrum Kings, trying to reverse sweep. These things will come into play when you tease and annoy the batter. When you come up with a few dot deliveries, these things will come into play. As Fayaz is a good hitter of cricket ball. He wants runs. He has that hunger to score, and he would love to put on a show. He's a different batter. And look, the international icon is on your screen right now. Parvez Rasool is having a word with another cricketer there.
the only international icon from this province, from this part of the world. That is the lad shining brightly on a screen right now. This is our brand. This is our own brand in the valley. This is Parvez Rasool for you. Such a wonderful cricketer. And he's on a screen and it's 86 for none. I think it was a good move. But they're not going to run like this and they're not going to fetch singles like this. Server need to be patient there. Imtiaz is doing nicely here. He has been clever over the past couple of balls. Now look what's going on with Server. He breaks free and puts that one away with Skalek. Look at that shuffle across. Exposed all the stumpers there. And goes over Skalek this time. The two men in the middle, the two openers, they're playing a different brand of cricket. Look at that shot. They're going to try, they're going to find in search of bigger boundaries. They will go for it. 92 on the board. The next one, he's going to look for one here. He will keep the strike. That marks the completion of over number 8. It's 93. It as well. Mohammad Mudassir and Server having a word. All smiles. Exchange of smiles. These are the lively moments. Lovely moments, the lovable moments, I call these moments. And that was another heart-winning moment there. 93 after 8 overs. Stallions bringing in such a combination. The captain of the side, the leader of the pack, the international icon, Mr. Parvez Rasool is there. And he's got his brother Asif Rasool in the lineup. Ahmed Bande, Fayaz Sarwar, Adil Katsur, Uwais Baba is in the lineup. And this is a pack team brought into the side, brought into the tournament. Thank you very much, TV umpire, Mr. Shokat Madi. Eight was done, 93 for none. What a stand shared by these two lads. Fantastic. Fantabulous. But captain goes back to Abasha again. He's going to finish his quota here. He's done with 3 and is back to bowl the final over of his quota. On strike is going to be Fayaz Sarwar. The 93 for none. The stroke play has been fine from Fayaz Sarwar. He's the Sopore's own talented lad, the dashing opener. And Bande telling his partner that there is no need to rush. Look at the scorecard. We have 94 on the board. We are just in over number 9. So there is no need to hurry. And we have runs. We have put on 94 of them with 11 over, with almost 12 overs. We can say now 11.5 balls are going to come. And we have all the time in the world to set the tone for a big score. And that one is surely going to hit the boundary cushion. That's 4 again. Exchange of smile. I think Fayaz telling his partner that you want to keep the strike. You are showing that hunger and as well as you don't want to hand over strike to me. Well, let's see how Bande will operate. Now moves to 65-29. I think you don't want to get distracted. You want to stay focused at the moment. We have the only centurion, that is Sahil Shafi from United Imports. Can we have the one more here in today's game? As Pandey moves to 66 of 30 balls. Batting with the strike rate of more than 200. It's around that 200 and more than that, shade over that. That one stays low. And this is the ball, you can't trust it. So you have to be at your level best. You can't go cross the line again and again. Ball may stay low, and the way it kept a bit low there, straight bat is an option. And you need to understand that turf wicket is totally different from mat. And that one, it was slashed hard. They're going to be overthrows, but Bande refused to scamper through again.
Bande wants to return the strike. And look what's going on. 100 up. 100 is raised on the board. After 8.5 balls. It is 100. Then it is 0 on the other side of the hyphen. We're done with 9th one. 9 overs. They're 100 without loss. Another 100 run partnership between the two openers. This is the third one in a space of 48 hours. Tonight we're going to make it to the 48, and inside 48 hours it is the third 100 run partnership. नौ ओवर समाप्त, 100 रन बने थे 9 के बाद। और अहमद बांडे 66 पे, फयाज सरवर 31 पे, ओवेश 32। 4 ओवर में उन्होंने रन खर्चे हैं 8 रन प्रति ओवर के हिसाब से। 11 ओवर का खेल बचा है। सोपोर की टीम एक बेहतरीन स्थिति में, एक मजबूत स्थिति में ला खड़ा कर दिया दो बल्लेबाजों ने। और ये शफल करके ऑप्शन से तो बाहर चले गए थे, वहां से लपेट करके ऑन साइड पे खेला और एक सिंगल पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन और खाते में। रन संख्या 101। 10वें ओवर की गेंदबाजी, 101 रन बना लिया है सोपोर स्टैलियंस। एक मजबूत और बेहतरीन शुरुआत अहमद उमर पांडे और फैयाज सरवर ने अब तक दिया टीम को। और क्या कमाल की बल्लेबाजी की है। बाएं हाथ के इम्तियाज अहमद फिर हवा में, स्टोक है उस ओर खिलाड़ी जा रहे हैं और यहां से उनसे बिस्फील्ड और गेंद सीमा रेखा से बाहर। 4 रनों के लिए एक और चौका। और लगातार यहां पे चौकों और छक्कों की बरसात। 125 सर्वाधिक वो दूसरी पारी में जब बल्लेबाजी हुई थी, रिकॉर्ड साझेदारी पहले विकेट के लिए। और अब इस विकेट पे ये साझेदारी 100 से अधिकतम। वो साझेदारी नाम तजमुल बाबा और उनके साथी हिनान मलिक के नाम। और आज भी हिनान मलिक ने पुलवामा में शतक ठोका, बेहतरीन पारी खेली। रियल सुल्तान समरबुग और उनका मुकाबला पीस 11 पुलवामा, और वहां भी बेहतरीन बल्लेबाजी। पर यहां अहमद बांडे लगातार कड़े प्रहार कर रहे हैं स्टैंड्स में। एक और छक्का। ये छक्कों और चौकों की बरसात जो हम लगातार शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, कड़े प्रहार के अलग रंग में दिखे हैं आज अहमद बांडे। 76 पे। यहां इस प्रतियोगिता में मात्र एक शतक वो साहिल शफी के नाम 106 रन नाबाद। और अहमद उमर बांडे 76 तक पहुंच चुके हैं। 111 9.3 ओवर की मात्र गेंदबाजी सोपोर स्टैलियंस। 11.68 प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाती हुई 32 पे फयाज सरवर। इम्तियाज अहमद का ये दूसरा ओवर, 19 खर्चे। इस ओवर में एक चौका फिर छक्का, कुल मिलाकर 11 रन 3 गेंदों से। इम्तियाज दबाव में, सामने अहमद बांडे। बल्ला पहले से हवा में, आखिरी गेंद लेकर के और इस बार सम्मान दिया, एक कदम आगे निकाला, बैट और पैड मिला करके सम्मानजनक रूप से खेला वापस बॉलर की दिशा में बगैर किसी रन के। 111 सोपोर स्टैलियंस। क्या शुरुआत दी आज जिन दो बल्लेबाजों ने, एक मजबूत आदर्शिला प्रदान की है इस प्रारंभिक छोड़ी ने सोपोर स्टैलियंस की टीम को अपने पहले ही मुकाबले में। लीजिए एक और तोहफा स्टैंड्स में, दर्शकों के नाम, सोपोर स्टैलियंस के नाम, अहमद उमर पांडे। कमाल की बल्लेबाजी ये आज की शाम अहमद उमर पांडे के नाम। इस छक्के के साथ उनका व्यक्तिगत योग पहुंच गया 82 पे। और सोपोर स्टैलियंस क्रिकेट क्लब 118 पे संभवतः पहुंच चुकी है। यह रिकॉर्ड साझेदारी पहले विकेट के लिए, हालांकि इससे पूर्व वो 119 रन का जो न्योता मिला था उसको सुल्तान वॉरियर्स, द रियल सुल्तान समरबुग ने, तजमुल बाबा और हिनान मलिक ने पूरा किया था 10 विकेट से। वो रिकॉर्ड साझेदारी थी और अब जाकर के उसके बिल्कुल नजदीक पहुंच चुके हैं। 117 9.5 के बाद अहमद बांडे 82। हल्के हाथों के साथ दौड़ पड़े 1 रन के लिए। क्या दूसरे की मांग होगी? जी हां, वो 10 ओवर से पिछले वो बल्लेबाजी कर रहे हैं और रनिंग बिटवीन द विकेट, वो तालमेल का परिचय। ऐसा लग रहा है कि अभी अभी आए बल्लेबाजी के लिए। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज। फिलहाल 10 समाप्त, 119 84 अहमद बांडे, फयाज सरवर 32। समय है ड्रिंक्स ब्रेक का।
It's time for the drinks in the middle. 119 after 10 overs. Time for drinks. And we also need a kind of breather here in the com. Stay tuned, stay connected. Welcome after the drinks break. It's 119 for none after 10 overs. There was a short pause in play because of the drinks break. And look at the attendance on that portion. There is a good size of audiences. The bystanders, or I think they are around that food court. The Courtland food court. They're trying to walk away with something to eat, trying to feed themselves this evening here at Bakshi Stadium. 109 for none after 10 overs. Imtiaz is gone for 27 off his 2 overs. Now Faizul Adar is given the ball. Bande 16 away from achieving that rare feat in the tournament. Will he get there? He needs just 16 more runs to bring up his ton and century in Red Premier League Season 2. Will he get there? Only time will tell. It remains to be seen. Oh, he's got the turn straight away. Some serious purchase on offer. Faizul Adar. Faizul, a young lad, is going to turn the ball. And the one we already saw that. You have seen that. The way ball turn. Server making a kind of adjustment. Bande sends him back. Not for runs. 120. Can they beat the early best of Tajamal Baba and Hinan Malik? Just 5 behind. Trying to slog it away. There is a shot for LBW and is turned down by Ravi Kumar Chaurasia. Faizullah. Oh, he's unhappy at all. He was pleading before umpire. And umpire is unmoved. Take a look again. Oh, he's going to reload again, so we don't have the replay right now. Later on, we'll try to go through that one. It's picked up. Where is this one going? And it's caught this time. And Ahmed Umar Bande is taken. Can't get to the 100. And the early best man is the best. And he's on his way back to pavilion. He's caught at long on. Needless from Bande. He was throwing his bat at everything. He throws his kitchen sink at it.
and he sinks itself and is on his way. 8-4, 6 sixes. Strike rate of 221. 84 of 38 balls. Breathtaking knock. Wonderful innings comes to an end. That brings the newcomer in at number 3. The two brothers in the lineup, Asif Rasool and Parvez Rasool. They are going to be the two potent weapons, the two man pillars of the side. Lot relies. Look at the celebration. It's just like that of karate celebration. The ninja. He gets his man there. He was damn sure. Oh, he knew that. I'm unable to find the elevation and the distance. First he thought once he leapt to the bat, he was eyeing towards wide mid-on. And the celebration, that is, one would love to watch that time and again and again. One would love to go through this celebration. The ninja one. I think the boy has watched the karate and the kung fu. The kung fu, it's 120 for 1 after 10.4. This is over number 11 we are in. There's some distraction. Server isn't feeling okay at the moment. He want to clear that portion. And now the umpire is telling them, please clear that area. Leave that side. There is some distraction. It's Ankit Narbal in at number 3. Ankit. First ball. Driven handsomely. Off the mark, Jaitrak does mop up. Now Fayaz need to take that responsibility as Ahmed is gone back to hut. Fayaz has to bat through the innings. He has to bat properly. Fazullah need to find one more here to put their side on the driver's seat again. To be back on track. Successful over done. 1 over, 1 wicket at just 2 from it. 121 for 1 after 11 overs. 11वें ओवर में लेकर के आए फैजुल्ला को और पहले ही ओवर में सफलता दिलाई। अहमद पांडे को चलता किया। 33 पे फयाज सरवर, अंकित नरवाल नए बल्लेबाज। सोपोर स्टैलियन के लिए नंबर 3 पे 121 पे 11 समाप्त। 9 ओवर का खेल, 9 विकेट हाथ में और बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर। पर क्या यहाँ से वापसी कर पाएगी टीम स्पेक्ट्रम किंग्स क्रिकेट क्लब, ये देखना होगा क्योंकि एक विकेट मिल चुका है और ऐसे में थोड़ा अंकुश लगाना होगा रन गति पे। बेहतर सही दिशा लंबाई के साथ गेंदबाजी करनी होगी। लाइन और लेंथ पे नियंत्रण करना होगा, सही लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी करनी होगी और छोटी गेंद से बचना होगा यहाँ गेंदबाजों को। फयाज सरवर 33 पे, अंकित नरवाल 1। इम्तियाज ने 2 ओवर में 27, तीसरा ओवर उनका। पहली गेंद लेकर के और वापस खेला था बॉलर की दिशा में, अपने ही फॉलो थ्रो में वहाँ पर मिसफील्ड हुआ और नतीजा 1 रन और खाते में। सफाई के साथ गेंद को रोक नहीं पाए और 1 रन और 2 पर पहुंच गया अंकित नरवाल। फयाज सरवर 33 पे 122, 1 विकेट पे 11.1 के बाद सोपोर स्टैलियंस। ये 12वां मुकाबला जेके सुपर सीमेंट रेड प्रीमियर लीग सेकंड एडिशन प्रेजेंटेड बाय अथवास। दिन रात्रि के इस मुकाबले में ये पहली पारी और दूसरी पारी में बल्लेबाजी करनी है स्पेक्ट्रम किंग्स को, तो कोशिश जरूर होगी कि 200 से कम लक्ष्य तक रोकें इस टीम को, क्योंकि इस विकेट पे दूसरी पारी में रन बनते देखे हैं। अच्छा विकेट है, बल्लेबाजी के लिए अनुकूल है। फिलहाल अगली गेंद और दूर से खेलने का प्रयास, स्टंप्स भी खेरे पर सुरक्षित पिछला पांव क्रीज में। आभाना की स्थिति में अब जाकर के दौड़ पड़े रन के लिए और रन पूरा कर लिया। 1 रन और खाते में, 1 रन के साथ रन संख्या 123, 1 विकेट पे। यहां एक बार फिर स्टंप्स भी गिरे थे, सुरक्षित था पिछला पांव, वही गेंद पास में फेंकी। जैसे देखा कि उस ओर फील्डर नहीं है, दौड़ पड़े रन के लिए। 11.2, 11.3, 123 पे 1, 2 पे अंकित नरवाल सामने। और इस ओवर में अभी तक 1 और 1 लेग बाई के रूप में 2 रन अभी तक आए हैं।
एक भाई के रूप में क्षमा कीजिएगा। हो, अच्छी गेंद थी, बेहतर गेंद थी इम्तियाज़ की। पढ़ने के बाद हल्का सा टर्न लिया गेंद ने और विकेट कीपर के पास बगैर किसी रन के 123 पे 1। 12वां ओवर, पहली पारी सोपोर स्टैलियंस की टीम एक अच्छी पोजीशन में, एक अच्छी स्थिति में। यहाँ कट किया पर सीधे फील्डर के पास, रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं। एक और अच्छा ओवर अभी तक घटता हुआ, मात्र 2 रन आए हैं 5 गेंदों से। और अहमद उमर पांडे का विकेट मिलने के बाद रन गति में अंकुश, पिछले ओवर में 2 रन आए, इस ओवर में भी अभी तक 2 आए हैं। यहाँ पर बड़ा स्ट्रोक, गैप में गेंद पर पीछे फील्डर तैनात हैं, एक सिंगल मिल जाएगा। अच्छा ओवर घटा, ओवर से आए 3, 12 समाप्त, 124 पे 1। सोपोर स्टैलियंस क्रिकेट क्लब टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था सोपोर स्टैलियंस ने और अब तक 124 रन बना लिया है। 8 ओवर अभी भी शेष हैं इस पहली पारी में सोपोर स्टैलियंस के लिए। देखना होगा बचे हुए 8 ओवर में, अगर आप 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाते हैं तो फिर 80 और जोड़ लेंगे, 204 तक टीम पहुंच पाएगी। और अवश्य है इस विकेट पे पर फैजुल्ला डार, ये 4 ओवर काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले, क्योंकि पहले ही ओवर में उन्होंने सफलता प्राप्त की अहमद पांडे की, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन गजब की पारी उन्होंने खेली अपने आज पहले ही मुकाबले में इस विकेट पे। 3 ओवर 29 रन इम्तियाज का कोटा। और अब एक बार फिर फैजुल्ला एक और ओवर लेकर के तैयार। अंकित निर्वाल सामने, बोल्ड कर दिया। लीजिए ये सेलिब्रेशन, ये मानो आदत सी हो गई है इस गेंदबाज की। और क्या कमाल की गेंदबाजी। और मेरे जहन में एक प्रश्न उठ रहा है मनवर, मैं आपसे उसका उत्तर जानना चाहूंगा। 11वें ओवर में लेकर के इस गेंदबाज को आए, क्या ऐसा संभव था कि आप 2-3 ओवर उसको पहले इस्तेमाल कर सकते थे? Surely there was an option. You were having plenty of options. And it's up to the captain, knowing that this lad is the pick of the bowlers. He has picked up 5 wicket haul. He has 5 under his belt in the tournament. Oh, look at the ninja celebration again. You know, he picked up the wicket of Ankit Narwal. And this lad has set things on fire in Delhi cricket. He's a big name in Delhi area. And Ankit Narwal is undone with a beauty. And there was an bounce and telling for our server. Oh, there isn't an bounce. I was trying to slog it away. But that's the beauty of bowler. Knowing that the surface may be tough one. We won't say that it is a belter and it is a benign white wall. There is a inner bounce and offer. We won't say that. This is the reality which is unfolding on your screens right now. All the listeners and viewers are watching it. They are closely observing. They have a close eye on it. But talking about the batters, they need to adapt. I'm not against anyone. Whosoever goes with his own technique, they know better than me what we have to do. But the simple punda, the idea is when you're a batter, when there is an enough bounce and offer, and even on matty tracks, all the on matty tracks and as well as on turf wickets, you have to go with a straight bat. That makes you a sensible player. That makes you something special. That doesn't mean that cross batters, they are not successful. Maybe successful in some of the areas, but to be precise, straight bat is an option. This is a potent weapon. You can keep all the threat away, and each and every threat which is being posed against you, you can keep that away on a cricketing field. I mean, you can keep your wicket safe, you can save your wicket, you can put premium on your wicket, which is an important thing. But talking about the Ankit Narwal, that was a wrong shot slap. People will come in and drop their comments. They will surely come in and talk about who are you to take a dig. Being commentator here in the com box, we have that try too. Looking at the surface, if someone scores 84 and throws his wicket away, and if he has to blame anyone, he has to blame himself because it was his own mistake. There was nothing in the surface. Then on the very next, we saw the back of Ankit Narwal, a batter of that caliber, of that stature, who has played in Pro League, in Delhi and other leagues in Delhi, where he's scoring in block. Playing here, going across the line, doesn't make any sense. Yeah, wicket may be tough. There is a bounce problem. There is the spinners, those quality leg spinners are getting drift and turn up the surface. I won't disagree. I will agree on that portion and on that point. But in the major context, you have to apply yourself and adjust and adapt to the conditions here. And we were talking about that Fazullah. It was better to use just one over. As a captain, you have to use this lad cautiously, as he's got just 4 overs. You got the majority of 4 overs to bowl in an innings.
So you have to give him cautiously these words. Capitalize cautiously. It was better to use his 1 hour early when Ahmed Bandi was running away with the scorecard as he piled 84 and he was now heading towards 100 or heading towards 100. He was eyeing that one big milestone here. But he is denied by some quality bowling. Faizullah and picking up the second one, another Dangerman sent packing. I think they missed the trick. बिल्कुल और मैं आपसे सहमत हूँ 126 पे 2 फैजुल्ला ने अच्छी गेंदबाजी की है। हालांकि कुछ रॉन्ग शॉट सिलेक्शन देखने को ज़रूर मिले। क्रॉस द लाइन जाकर के आप खेलने का प्रयास करेंगे इस विकेट पे जहाँ पे उतना ज़्यादा बाउंस है ही नहीं विकेट पे, तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप बल्लेबाजी करें। विकेट का जो स्वभाव है, विकेट का जो व्यवहार है, उसके मुताबिक आप बल्लेबाजी करें। पर प्रशंसा करनी होगी फैजुल्ला डार की। 2 ओवर 5 रन 2 विकेट, 13 ओवर में 127 पे 2, फैयाज सरवर 33 पे, आदिल काचरू 3 पे। आदिल काचरू भी एक बेहतरीन बल्लेबाज हैं और इस टूर्नामेंट में सोपोर स्टैलियंस के लिए उन्हें खेलने का अवसर मिला है और एक बेहतरीन और गजब के फॉर्म में है और पिछली कुछ बेहतरीन पारियां उन्होंने खेली। अपने अकेले दम पे उन्होंने टीम को मैच जिताए हैं, तो कहीं ना कहीं ये अच्छा और कहना चाहिए एक प्लस पॉइंट सोपोर स्टैलियंस के लिए। इस मैच में 7 ओवर का खेल बचा है। बचे हुए 7 ओवर में कहां तक पहुंच पाएगी सोपोर स्टैलियंस। 127 2 विकेट पे 13 ओवर की गेंदबाजी, 7 ओवर का आना बाकी। फैजुल्ला डार 2 ओवर 5 रन 2 विकेट, कमाल की गेंदबाजी। 9.77 प्रति ओवर के हिसाब से आदिल काचरू सामने। इम्तियाज का ये आखिरी ओवर होगा 3 में 29 और गेंद की पिच तक पहुंचे। बेहतर बल्लेबाजी और आदिल काचरू और उनके साथ फैयाज सरवर जो कि पारी का प्रारंभ करने आए थे। फैयाज सरवर अहमद बांडे के साथ, पहले अहमद बांडे 84 बनाए, फिर अंकित नरवाल एक अच्छी गेंद पर अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास था और साफ बोल्ड हुए। दोनों विकेट फैजुल्ला डार के खाते में। ऑफ स्टंप से बाहर जा रही थी गेंद पड़ने के बाद, उस गेंद का पीछा जरूर किया वहां पर बल्लेबाज ने, पर रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं। रन संख्या अभी भी टिकी हुई 127, 2 विकेट के नुकसान पे। 13.2 ओवर की गेंदबाजी। और देखा जाए तो ऐसे में देखा जाए तो निश्चित तौर पे एक बेहतरीन और शानदार गेंदबाजी, पर 2 विकेट जरूर मिले हैं। सामने आदिल काचरू, इम्तियाज। और बड़ा स्ट्रोक था, यह खूबसूरत स्ट्रोक था जो 6 रन अर्जित किया है। स्टैंड्स में जा लगी थी, बड़ा स्ट्रोक था ये आदिल काचरू के बल्ले से और इस छक्के के साथ रन संख्या में वृद्धि होती है और बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी। आदिल काचरू इस प्रकार के स्ट्रोक्स के लिए जाने जाते हैं। 133 पे 2 इम्तियाज काचरू के लिए। एक बार फिर अच्छा स्ट्रोक है, पर पीछे फील्डर तैनात जरूर हैं। जब तक वे गेंद को फील्ड करके थ्रो करते, दोनों बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय था सिंगल लेने का। 1 रन और खाते में और 1 रन के साथ रन संख्या में वृद्धि होती हुई ये रन संख्या पहुंच गई है 134 पे 2। 13.4 ओवर की गेंदबाजी। फैयाज सरवर 33, 29 गेंदों से, आदिल काचरू 10, 8 गेंदों से। और अभी भी इस ओवर के बाद 6 ओवर का आना बाकी, तो कोशिश जरूर 200 से अधिकतम लक्ष्य खड़ा करने की। इस बार फिर चपल करते हुए ऑफ स्टंप की ओर चले गए थे और उसके बाद ऑन साइड में खेले। जाहिद तराग वहां पर तैयार, गेंद को फील्ड तो कर लिया पर 1 रन लेने से नहीं रोक पाए। 1 रन और खाते में। 135 पे 2। 13.5 ओवर की गेंदबाजी। अंतिम गेंद का आना बाकी इस ओवर में। आदिल काचरू एक बेहतरीन अनुभवी खिलाड़ी, एक विस्फोटक खिलाड़ी, और फैयाज सरवर भी एक बेहतरीन और अच्छा खासा उनके पास भी आना हुआ। बेहतरीन पारी खेली है, 30 से 34 पे नाबाद है। एक छोड़ से उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। वो यहाँ पे एक अवसर बना जरूर था पर गेंद फील्डर की पहुंच से, गेंदबाज की पहुंच से दूर जरूर थी। एक ट्राई जरूर उन्होंने किया था पर उसमें सफल नहीं हुए, पर कुछ रन जरूर बटोर लिए दोनों बल्लेबाजों ने। ओवर की हो गई समाप्ति, 14 समाप्त, 137 पे 2 सोपोर स्टैलियंस क्रिकेट क्लब। 6 ओवर का खेल बचा है। 12 पे आदिल काचरू, फैयाज सरवर 34 पे। 6 ओवर। अरे ये खूबसूरत शानदार विजुअल्स हैं। जेके सुपर सीनियर रेड प्रीमियर लीग 2025 सेकंड एडिशन प्रेजेंटेड बाय अथवास। 12वां मुकाबला, पहली पारी। अभी भी 6 ओवर इस पारी के, फिर अगली पारी के 20 ओवर और 26 ओवर का खेल अभी भी शेष है इस मैच में।
आसान परिस्थितियां हैं नहीं, और पूरा दिन आज दर्शकों ने एंजॉय किया। आज का दिन दर्शकों के नाम खूबसूरत क्रिकेट। पहले मुकाबले में सुल्तान को हार का सामना करना पड़ा, दूसरे मुकाबले में सुपर ओवर में वो शानदार मुकाबला यूनाइटेड इंपोर्ट्स ने जीता, और इस तीसरे मुकाबले में देखना होगा कौन सी टीम जीत अर्जित करेगी। नेवर की शुरुआत, फैजुल्ला डार का तीसरा ओवर, इससे पूर्व 2 ओवर में 5 रन 2 विकेट, अब तक की दोनों सफलताएं उनके नाम 137। नेवर की शुरुआत, पहली गेंद पर सिंगल 138 पे 2, आदिल काचरू 12 पे 9 गेंदों से, और उनके साथ फयाज सरवर 35 पे 31 गेंदों से 9.74 प्रति ओवर के हिसाब से रन बने हैं। या टीम सोपोर स्टैलियंस क्रिकेट क्लब के। अच्छी गेंद थी पर खेलना जरूर चाहते थे, हालांकि सफल भी हुए, पर रन बनने की संभावना थी नहीं। 138 पे 2, 15वां ओवर। फैजुल्ला डार, अच्छी गेंदबाजी, अनुशासन, पहनापन, किफायतीपन उनकी गेंदबाजी में, पर यह आदिल काचरू है और गेंद को सीधे पहुंचा दिया बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। लगातार प्लान और स्टेज सेट है, कोई ये दबाव नहीं है यहां पर आदिल काचरू पे। रन संख्या 142 तक पहुंच चुकी है 15वें ओवर में, और बहुत ही बेहतरीन ऊर्जा का संचार किया था, तेज स्ट्रोक जरूर था, और 4 रन और खाते में जोड़ लिए आदिल काचरू ने। इस बार वापस बॉलर की दिशा में अच्छी गेंद थी, 14.4, 142। फैजुल्ला डार 10 रन देकर के अब तक 2 विकेट प्राप्त किए उन्होंने। 5 रन आ चुके हैं इस ओवर से, यहां एक सिंगल मिल जाएगा, पर जैसे ही देखा गेंद सीधे फील्डर के पास, वापस अपने कदम सुरक्षित क्रीज में। इम्तियाज थे वहां पर तैनात। 5 गेंदों से 5 रन, पहली गेंद पर सिंगल, फिर डॉट, 4, फिर उसके बाद 2 डॉट गेंदें, आखिरी गेंद इस ओवर की। एक और बढ़िया ओवर, बहुत ही बेहतरीन गेंद पड़ने के बाद बिल्कुल नीचे रहते हुए, समझ नहीं पाए वह आदिल काचरू करें तो क्या करें, पर भाग्यशाली रहे और गेंद सीधे वहां पर विकेट कीपर के पास। ओवर की समाप्ति 15 समाप्त, 142 पे 2, और 3 ओवर में 10 रन 2 विकेट। कमाल की गेंदबाजी, जहां एक छोर से बल्लेबाजों ने प्रहार किए हैं गेंदबाजों पर, खासकर मुदस्सिर जो एक अनुभवी गेंदबाज है, उनके विरुद्ध कड़े प्रहार किए हैं, विस्फोट किया है बाकी गेंदबाजों के बाद। वहां जाकर के फैजुल्ला डार ने मात्र 10 रन खर्चे 3 ओवर में। प्रशंसा करने होगी गेंदबाज की। 15 ओवर समाप्त, 142, 2 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर का खेल सोपोर स्टैलियंस के लिए। Brilliant spell. Once again, pick up the ballers, showing that grit, bowling in the right areas, picking up wickets on wheel. Another finding. I know him very well over the past couple of years, Fazul Adar, but here he is coming into the limelight. Well, with this wonderful display of character the other day, even today. That consistency is important. You got to be consistent. You have to perform on consistent basis. But this sir, bit expensive today. Uwasha was unlucky there, and Fazula removed Ahmed Bande, then followed up with wicket number 2. That was the wicket of Ankit Narwal, the boy coming from Delhi, that distant place of Delhi, was wreak havoc with the bat in local cricket over there in different leagues, but today, without bothering anyone, without bothering scorers, he sent packing 2 for 142 after 15 overs. Jaitrak back into the attack, found over gone for 15. Back for the second spell. This is good mix up here. He varied the pace, leading edge low but off. Server is gone. Good mix up. This is called the great awareness of the game. Using his mind here properly. He took pace off. And in the end, there is going to be the flying kiss. And that is the person I was talking about. Leading it low but off.
And with that wicket, one more falls. There is third one to go. Jayed using the surface to perfection here. He knows this surface. It is a sluggish one. Ball is holding up a bit, and it's keeping low at times. Wicketkeeper does well, holding on to the ball. Third one bites the dust. The set batter is gone, and that brings number 5. It's Gulzar. No, it isn't Gulzar. It's written Gulzar on his t-shirt, and it is Asif Ramzan in a number 5. Technically sound wicketkeeper batter from Pampo town of the Saffron town of Valley. Comes in at number 5, but I think they should work on it. It isn't good. Putting on different t-shirts with different names. Well, it's 142. I thought it's someone else, but it was then looking at his beard on his face. 142 for 3. This is 16th over in. Jayed has his man on a very first ball. He's back for the second spell. The fresh one for Jayed. Back along the track, not for runs. Good stop there in the follow-through. Imtiaz is having a word. Can they restrict them under 180? That's going to be quite some achievement. At once it look like that 250 is on cards. And cricket changing its colors once again here. That's why consistency is important thing. It matters. How you're going to persist. And great athleticism is all about that I'm going to bite the bullet and I won't give up. Guided nicely. There is a kind of fumble. They're going to look for 2 here. Who knows? They will push for the third one as Rishi, Adil Kasur and his partner Asif Ramzan. They're so quick between the wickets. Quick and cheeky. Good running between the wickets. Where they were just 1, he conceded 3 on there. 3 more runs added. It's 145 for 3 now. 16th over, much needed. Important runs coming. That will relieve the 2 batters in the middle. Kasur on strike, batting on 16. Asif Ramzan is equally talented. Having that instinct, he can also launch when required. Once again, that slower one comes into play. He's variating, and Adil Kasur was eyeing that mid-wicket. He was trying to slog it. Jayed, and you can understand that a pacer of that level, you kneels down on one knee and trying to slog it. That means where the pace is, he's taking pace off. He's trying to mix it up. He took all the pace off on that occasion. Otherwise, it isn't easy to bend your knees against the likes of Jayed. But the next one is Quickie. Is a quicker one. Oh, there is a fumble. And that is going to cost them another brace here. That isn't good from the fielding unit. Sluggish and sloppy field today. Showing that laziness and the imprudence on different portions of the field today. They're lacking in this spot. And these fielders are letting their bowlers simply down here. They need to improve their field. And the owner of the club need to work on it. 147 for 3. Last ball of 16th over. Once again a change of pace. Guided nicely. Fielder does well. What could have been a boundary and limited the scoring down to paltry single. Done with 16, 148 for 3. He does well there. And this lad, all of a sudden, comes to live and puts in a dive to stop the ball. What could have been more than 1 there. At one stage it looked like that they will finish around 100 and 200 plus. Now it looks like that it will be hard to find 180 mark. Projected score is showing that they're going to finish beyond 180s. But the runs are not coming the way they require and need at the moment. On the other side, credit to the bowling unit. Less experienced unit are troubling the batters. Especially this lad, Fazul Adar. He has FIFA under his belt in this tournament, and Jayed does well in this over. The way he mixed it up, and Fazullah is going to finish his quota here. Is going to be in his final over. 3 overs, 2 for 10. Economy of shade over 3. Miser stingy, not giving anything away. He's keeping it tight and simple.
He's getting ready to operate again. This is going to over number 17 and his fourth one. Could be tight. Directed need, not a clean stop. 149 for 3. The two batters in the middle, the right and left hand combination, and they know how to up the tempo. And it's the high time. It's now or never. Asif Ramzan and Adil Kasur should look for big shots. And if we talk of Wasim Kasur and Adil Kasur, and we can use Kachru here. I still remember there were quite a few who told me that it's Kasur, but you can also use the word Kachru because it's K-A-C-H-R-O. When it comes to the pronunciation, you can. Kasur is K-A-C-H-U-R. You can call that Kasur. Well, coming back to this game of cricket, that's a good looking shot. Square on the on. Going for the sweep shot, connectors. There isn't enough bounce on offer, so it won't be easy to sweep the ball. And you have to find the ball properly, then to go for the sweep shot. It's 150 up in 17th over. When Bondi was playing, it looked like that 200 isn't a big deal. But that's the beauty of game. It can change its colors. There are going to be ups and downs, ebbs and flows. And we saw earlier on the match which went to the super over. That's a quality sweep shot. This time it's gonna be runs, 4 of them. Much needed to their delight and for the fans in the dugout, in the different portions of the ground. Even in the dugout, there are some of the cricket lovers who are coming alongside the team there. Oh, that's a quality sweep shot. So nice. Pure class there. Elegance. Neatly done. 154 for 3. Fazullah in his fourth over, 3.32 for 16. Now shuffle across. He followed the batter. Goes with a straighter one. Denied that big shot as he's trying to launch big. This is the high time. They need runs here badly. They need to finish around somewhere around 180, 190. Looking at the first 10 overs, they were going all guns blazing. Once again a good delivery. He's trying to shape for that big shot. He's shaping for the big shot. And bowler is dictating terms at the moment. Not allowing Adil Kasur to go big. He's unable to launch. 3 for 155. The last ball of over number 17 is going to come. He's going to finish his quota. As of now, 2 for 17. And where the final ball is going to go now? On strike, Asif Ramzan. With the Gillian backward a point in place. Wraps him on pad. Shot for LBW and a stand down straight away. We're done with over number 17. Sopore Stallions batting first. 3 for 155. And this is JK Super Cement Red Premier League Season 2 match number 12. Presented by Athwas. And those who want to watch, where to find it? Where to find the live streaming? It's on JK Sports Time Facebook. It's live on JK Sports Time YouTube. And moreover, Red FM JK. Thank you Bashar Saab. Thank you very much for your kindness. It's 3 for 155 as we are going to be over number 18. You never know when time is going to change. And I still remember the words of Mansoor Nazir. He often speak about it. Time, weather and wicket. You never know when it's going to change. And we've seen a drastic change. In first 10 overs, it was full of runs. The next 10 overs, bowlers are ruling and they're enjoying the ride. They're calling the shot, dictating terms and posing a kind of a threat. The batters are unable to understand what to do under certain circumstances. In the meantime, it's going to be Jai to continue in his third over and overall 18th over. First ball, there is a man at Scarag. He will end up as a mute spectator. That's gone. And it hit that grill on that portion. That's gone all the way for a maximum. With that 161 on the board. He took pace off. Oh, back off the end slower. But Kachru read that one properly. And with that swing of the bat, it flies and goes all the way for a maximum.
161. Back off, then slower goes for runs. What he's gonna do now? Is he gonna for the pace way? Is he gonna go with the pace now? No, once again, oh, he took pace off. Smart cricket from cleverly done by bowler there. I thought he's gonna up for the pace, but no. Once again going with that slower one. This time he succeed, and he gets away with that one. It's a dot ball. It's a gold dust here. It is important dot ball. Every dot ball is like gold dust here. 161 for 3. Ajit continues to operate. Oh, look at that one again. He's taking pace off. But this one is going to run down to the boundary. In control, but he finds his fence. Adil Kachru. Oh, cleverly done this time. Smart. What a shot there. Look at that, a kind of a tap on the ball. Look, he checked his shot in there. Oh, still find his boundary for that. Well, this is going to frustrate the bowler. This is going to put him under the pressure now. What he can do now? He was trying to mix it up with slow ones or the back of the end slower ones. Rolling fingers over the ball, but this time he need no pace. Or is he going to find that Yorker length? Is he going to York him? 165 for 3. Got to 35-24 balls. Jahid continues to operate. Oh, look at that one. Pace dispatched. Oh, that is biggest. Oh, it's gone on to the last tier for a maximum. Colossal, humongous, country mile. Many a mile. It flies. It goes the distance. And that was the pace. And he was expecting that pace. And he can make the pace. Race and race. There it is. The ace with that wonderful hit. Getting the pace. Getting 6 for that. बड़ा स्ट्रोक आदिल काचरू के द्वारा 41 पर पहुंच गए 25 गेंदों से 171 पे 3 17.4 2 गेंदे इस ओवर के फिर 2 ओवर कुल मिलाकर 14 गेंदें बची हैं और क्या 200 तक पहुंच पाएगी टीम सुपर स्टालियन कोशिश जरूर होगी जाहिर तराक के इस ओवर में 2 छक्के 1 चौका और यहाँ पर फिर गति परिवर्तन ऑफ स्टंप के आसपास और चतुरता के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं पर अब तक 16 रन आ चुके हैं इस ओवर से 5 गेंदों में 16 रन 2.5 ओवर में 37 काफी खर्चीले साबित हुए 1 विकेट जरूर मिला है काचरू 41 पे है 26 गेंदों से आसिफ रमजान 4 पे 171 पे 3 सोपोर स्टैलियंस क्रिकेट क्लब बनाम स्पेक्ट्रम किंग्स क्रिकेट क्लब के बीच ये मुकाबला 12वां इस बार डाउन द ट्रैक फिर गति में परिवर्तन फिर चकमा दिया ऑफ स्टंप के आसपास ये गेंद नीचे रहती है सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में 2 डॉट गेंदें ओवर समाप्त 18 समाप्त सोपोर स्टैलियंस 171 पे 3 2 ओवर का खेल बचा है 2 ओवर में 20 तो 191 कोशिश ज़रूर होगी क्योंकि क्षमता है न सिर्फ आदिल काचरू में बल्कि आसिफ रमज़ान भी बड़े स्ट्रोक खेलने की क्षमता रखते हैं और बल्लेबाजी में विकल्प आपके पास बहुत सारे हैं अभी आसिफ रसूल का आना बाकी है परवेज़ रसूल आपकी टीम का हिस्सा है उसके अलावा कुछ अन्य दीगर खिलाड़ी तो बेहतरीन कॉम्बिनेशन लेकर के उतरा है सुपर स्टालियन इस पहले मुकाबले में पर यहाँ प्रशंसा करनी होगी स्पेक्ट्रम किंग्स के जो एक समय में 240-250 लग रहा था लक्ष्य वो 171 तक सीमित रखा है 3 विकेट में भले ही विकेट ना मिले हो पर 18 ओवर में 171 वो अहमद उमर बांडे की शुरुआत में पारी 120 की पहले विकेट के लिए साझेदारी और उसके बाद से ये बेहतरीन वापसी और 171 जरूर बने हैं पर अभी भी 2 ओवर का आना बाकी जाहिद तराक 3 ओवर 37 रन 1 विकेट किस गेंदबाज का चयन किया जाएगा फैजुल्लाह के 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं पर बेहतरीन गेंदबाजी उन्होंने किए 18-20 रन उन्होंने 4 ओवर में दिए 2 विकेट भी प्राप्त किए एक अच्छी गेंदबाजी और 1 विकेट जाहिद तराक को और उनके अलावा किसी भी गेंदबाज को सफलता नहीं मिली आसिफ रमजान बाएं हाथ के बल्लेबाज सामने मोहम्मद मुदस्सिर संभवतः मोहम्मद मुनज़्ज़िर संभवतः गेंदबाज हैं और वो करेंगे गेंदबाजी 19वां ओवर पारी का सामने होंगे आसिफ रमजान और देखना होगा यहां से या आखिरी 2 ओवर में कितने रन बटोर पाएगी टीम सोपोर स्टालियन क्रिकेट क्लब पहली गेंद आसिफ रमजान ने खूबसूरती के साथ उसको खेला यहां और शानदार फील्डिंग ये चौका जरूर बचाया है पर 2 रन जरूर 2 रन और खाते में 173 पे 3 18.1 के बाद 11 गेंदों का आना बाकी इस ओवर में अभी भी 5 गेंदें बाकी हैं मोहम्मद मुनज़्ज़िर इस समय बीच मैदान में गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पे चेक किया जा रहा है
और ये संभवतः चौका अर्जित किया गया। जी हाँ, 4 रन और खाते में, और ऐसे में 4 रन खाते में जोड़ते हुए, क्योंकि थर्ड अंपायर का निर्णय आ गया है। और ऐसे में रन संख्या 175 पे 3, चौका पहली गेंद पर। 18.1 ओवर की गेंदबाजी, 175 पे 3, ये बड़ा है, ये स्टैंड्स में 6 मिल जाएंगे। पहली गेंद पर चौका, दूसरी पे छक्का आसिफ रमजान के बल्ले से 14 पर पहुंच गए 6 गेंदों से, 181 पे 3, और बेहतर तरीके से फिनिश करना होगा अब इस मुकाबले को। पर यहाँ आखिरी ओवर्स में कम से कम रन खर्चने होंगे गेंदबाजों को, जहां तक सवाल है स्पेक्ट्रम किंग्स की गेंदबाजों का आसिफ रमजान के लिए। खूबसूरती के साथ गेंद को सीधे डिपॉजिट कर दिया स्टैंड्स में। 6 रन और खाते में 2 गेंदों से आए 10, और फिर तीसरी गेंद पर लीजिए एक और। कमाल की बल्लेबाजी, बड़ा ओवर तलाश रहे थे, अरे निश्चित तौर पर इसमें कोई दारा नहीं है। यहाँ पहली गेंद पर चौका, फिर दूसरी गेंद पर छक्का, फिर तीसरी गेंद पर भी छक्का। कमाल की बल्लेबाजी, और ये देख लीजिए कनेक्शन सही, खूबसूरती के साथ। रन संख्या इस समय उछलती कूदती छलांगे मारते हुए, ये कुल रन संख्या 187। पहली गेंद पर चौका, दूसरी पे छक्का, तीसरी पे छक्का, और ये चौथी पे एक बार फिर मिलेंगे 6। 3 गेंदों से 3 छक्के, कमाल की बल्लेबाजी। आसिफ रमजान का तूफान इस ओवर में 193, और 4 गेंदों से 22 आ चुके हैं। 1 चौका, उसके बाद 3 छक्के। आसिफ रमजान कहानी को एक नई दिशा दे रहे हैं। अंतिम ओवर्स में कड़े प्रहार, वो 200 जो लग रहा था कि शायद नहीं पहुंच पाएगी, पर अभी भी 2 गेंदों का आना बाकी। 193 पे 3, ऑफ स्टंप से थोड़ा बाहर थी गेंद, खेला जरूर, तेजी के साथ दौड़ पड़े, 1 रन और पिछली 5 गेंदों से अब तक 23 रन आ चुके हैं। बड़ा ओवर, ये पहला ओवर था मोहम्मद मुनज्जिर का। 194 पे 3, 18.5 ओवर की गेंदबाजी। अंतिम गेंद का आना बाकी। सोपोर स्टालियंस क्रिकेट क्लब 200 के नजदीक पहुंच चुके हैं, और अवश्य अब 200 का लक्ष्य होगा, क्योंकि अभी भी इस ओवर के बाद, यानी कि 1 गेंद बची है और आखिरी गेंद, 7 गेंदें आनी बाकी। 194 पे 3, 18.5 के बाद आदिल काचरू सामने, पर ये धीमी गति की गेंद, गति परिवर्तन, चकमा दिया, गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में। ओवर से आए 23, 194 पे 3, 19 समाप्त। सोपोर स्टैलियंस क्रिकेट क्लब 194 for 3 after 19 overs, a dot to end the over number 19. Mohammad Munazir gone for 23 of his solitary over of his only over, and he was taken to the clean as. It was a clean hitting, clean as a whistle, as Asif Ramzan decided to take him on. 3 sixes and a boundary, and Adil Kachru, he was left with only ball to face. Unable to launch that, he was eyeing to go big and doesn't middle it. The laser lights pressed into service, and we have that music system in the background going on that is really disturbing and annoying and irritating at times, and there is a kind of vibration going on. Jai Thrug will bowl the final over. The final over, 6 balls. Jai has got the ball. Asif Ramzan launched that one into the night sky. It's gone away from the sun onto the rooftop for a country mile. 6 miles away. It flies, goes the distance and gone away. What a start turnover. 200 up for Stallions. Batting first in today's game. It's overall match number 12. The first ball, it was in the zone, using that pace, length ball. Oh, wow, what a shot. Flick up the wrist again. Next one, change of pace. He whips it away. Soft hands coming into play. Moves to 34 of 11 balls. What an innings. Crackerjack of a cameo. Delicious one. And one would love to be part of it. And spectators here, they're loving this knock. And with that brace,
It's more than 200 now. It's 202 or 202 for the loss of 3 with 4 balls to go. This is the final over. We're 2 balls down, 4 balls remaining in the final over. Here comes Jaitrag again. He's going back to the top of his bowling mark. What can he do now? Asif Ramzan. Is he going to give himself charge? Will he use that pace of the ball? That one, it flies. Should be easy one. Should be easy one for Jayed. And he's taken. It's caught and bowled by Jayed. Asif Ramzan is on his way. Cameo and blistering cameo comes to an end with that catch there. And it's wicket number 4 down. He has done the job. He's played his spot here. And look at it, he was early into the shot. And he closes the bat face. And leading it low bit off. And that brings, I think it's Asif Rasool in at number 6. Asif Rasool walks in at number 6. The 2 brothers playing for Sopore Stallions in the tournament. And these 2 are going to be a force to reckon in the tournament. One is the international icon, the other one is the local star here. And he has also played the basic level cricket. Asif Rasool is going to take strike. Jaitrag is going to operate again. Take a look again. These are the boys who are handling the music system. There it is. Laser lights and other things are going on. Back to the game again. This is JK Super Simin Rad Premier League Season 2. Presented by Athwas. It's match number 12 underway. Myself Manavar Tanveer, I got Sheikh Nazir in the com box. Bringing you the live vibes your way at your doorsteps. Wherever you are, stay there. Stay there. Stay at your comfort. Oh, look at Ankit Narwal is warming up a bit. Well, there was a cricket charger in the dugout too. While Asif Rasool is marking the fresh guard. What can Asif do now? Oh, no helmet on. Jayed has got the serious space and the tremendous space. He's going to bang in shot. He does that. Does well. Makes the ball climb. And Asif does well. Keeps it away to point area without helmet. He's a tall, lanky, I know that, but it was a risky move. Now the 2 balls are going to come. Adil Katsur on strike. 41 of 28. Will he get to his 50? Just 2 balls to come. Is it going to be another 50 in today's game? Will he get there? Just 2 balls to come. Adil on 41. Jayed, he's got the ball. Slavaman. And he misread it completely. And he's... Oh, look at this over. How nicely has bowled thus far in an over here. 6 of the first ball. Then a brace. Removed Asif Ramzan. Nice comeback. That you call the comeback. 6 to 8. 9, 10 of 5 balls. 1 ball remaining. Can they finish it on 210? That means they can equal the score of United Imports. The first inning best score. And that one, that is a cracking shot. Into the extra cover boundary for 4. They're going to finish on 208. Can't cross the line. Can't go past that. United Imports first inning best score. They will finish at 208, 209 to get. We shall be back with the chase. Join us for the chase. Assalamu alaikum and fi aman.
अस्सलामुअलैकुम, हार्दिक स्वागत दूसरी पारी में आप सभी व्यूवर्स का। सोपोर स्टैलियंस ने पहली पारी बनाए 208 4 विकेट पे 20 ओवर में 209 रन बनाने हैं। स्पेक्ट्रम किंग्स क्रिकेट क्लब को 210 सर्वाधिक स्कोर, 210 रन सर्वाधिक स्कोर। और यूनाइटेड इंपोर्ट्स क्रिकेट क्लब ने 210 रन बनाए थे, वो सर्वाधिक स्कोर है इस टूर्नामेंट का। पर आज 208 रन बने सोपोर स्टालियंस द्वारा, 4 विकेट खोए उन्होंने। वो 84 रनों की बेहतरीन पारी अहमद उमर बांडे ने, और आसिफ रमजान ने भी अंत में बेहतरीन पारी खेली। उसके अलावा आदिल खाचू ने भी अच्छी पारी खेली, और साथ में फयाज सरवर ने। तो कुल मिलाकर बेहतरीन पारियां देखने को मिली। 208 तक पहुंची 4 ओवर में सोपोर स्टालियंस। स्पेक्ट्रम किंग्स क्रिकेट क्लब एक विशाल लक्ष्य, आंखों में एक उम्मीद लिए, एक आस लिए पहली जीत की, और 20 ओवर में 209 रन बनाने हैं। शुरुआत होने जा रही है गेंदबाजी में सोपोर स्टैलियंस के लिए। किस गेंदबाज का चयन किया जाएगा शुरुआत में, यह देखना होगा। पर एक ठोस शुरुआत, एक मजबूत शुरुआत, एक ठोस आधारशिला प्रदान करनी होगी यहां शुरुआती ओवर्स में टीम स्पेक्ट्रम किंग्स क्रिकेट क्लब को, क्योंकि 208 रन आसान लक्ष्य नहीं है। भले ही T20, भले ही क्रिकेट महान निश्चिंताओं का खेल हो, पर आसान नहीं है। बड़े लक्ष्य का एक अतिरिक्त दबाव रहता है, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर रहता है जब आप 200 से अधिकतम चेज कर रहे हो। मुज्तबा यूसुफ शुरुआत करेंगे गेंदबाजी में। एक बेहतरीन शानदार अनुभवी गेंदबाज मुज्तबा यूसुफ, तेज गेंदबाज जिनके पास गति है, जिनके पास अनुभव है, जिनके पास एक्यूरेसी है, और फॉर्मर JKC क्रिकेटर रह चुके हैं मुज्तबा यूसुफ। और दानिश हिलाल शुरुआत करेंगे बल्लेबाजी में मोहम्मद मुनज़्ज़िर के साथ। पहली गेंद मुज्तबा की, बाएं हाथ के तेज गेंदबाज, ऑफ स्टंप से थोड़ा बाहर की तरफ ये गेंद थी। और मुज्तबा एक अनुभवी खिलाड़ी है, अगर निश्चित तौर पर जिक्र करें तो उनके पास अनुभव की कमी नहीं है, बहुत ही बेहतरीन क्रिकेटर हैं। पर यहाँ उनको एक बेहतर शुरुआत चाहिए। सोपोर स्टैलियंस की ओर से उन्हें खेलने का अवसर मिला है। दानिश हिलाल शून्य पे एक गेंद का सामना किया। मोहम्मद मुनज़्ज़िर उनके साथ शुरुआत में आए हैं। मुज्तबा यूसुफ अगले गेंद लेकर के, बाएं हाथ के तेज गेंदबाज। ये गेंद अच्छी गेंद थी, इस बार उछाल था नहीं गेंद में, पड़ने के बाद हल्का सा उछाल जरूर था। पर दानिश हिलाल की बात करें, वो एक बेहतरीन खिलाड़ी है, एक बेहतरीन खिलाड़ी, अनुभवी खिलाड़ी है। पर यहाँ उस अनुभव को पूरी तरह से और अपना 100% देना होगा इस मैच में, तब जा करके परिणाम आपके हित में आएगा। क्योंकि बहुत कम ऐसे अवसर मिलते हैं जहां आपको इन परिस्थितियों में अपने उस टैलेंट का प्रयोग करना पड़ता है, और यहाँ ज़रूरी है आप बेहतर तरीके से शुरुआत में थोड़ा सा समय लीजिए, आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी कीजिए। एक बार आपकी निगाहें जम जाएं तो फिर आप बेहतर बल्लेबाजी कर सकते हैं। सामने की ओर खूबसूरती के साथ कमाल का ये स्ट्रोक, और गेंद जा रही है सीमा रेखा की ओर। हालांकि गेंद की गति वहां पर खुद ब खुद कम होती हुई, जब तक उसको फील्ड किया जाता, थ्रो किया जाता, दोनों बल्लेबाजों के पास समय था कुछ रन बटोरने का। पर स्ट्रोक कमाल का, कलाइयों के दम पर सामने की ओर सीधे बल्ले से बेहतरीन स्ट्रोक, तेज गेंदबाज के विरोध, और आकर्षण दिखाया वहां पर, वो क्षमता दिखाई, वो कला दिखाई, वो प्रतिभा दिखाई दानिश हिलाल ने। और इस प्रकार से खाता खुलता हुआ स्पेक्ट्रम किंग्स क्रिकेट क्लब को। और 3 रन वहां पर जोड़े दानिश हिलाल और मोहम्मद मुनज़्ज़िर ने। मोहम्मद मुनज़्ज़िर सामने 10.56 रिक्वायर्ड रन रेट शुरुआत में मुज्तबा यूसुफ का इस्तेमाल किया गया है गेंदबाजी में। मोहम्मद मुनज़्ज़िर अब सामने 3 बगैर नुकसान के स्पेक्ट्रम किंग्स क्रिकेट क्लब। दिन रात के इस मुकाबले में दूधिया प्रकाश में नावा मैदान। दूसरी पारी 209 रन चाहिए चेज के लिए, इस मैच को जीतने के लिए सोपोर स्टालियंस के बाद। बोल्ड कर दिया गेंद को, सीधे स्टंप्स पे जा था बेटा, और पड़ने के बाद नीची रहती हुई गेंद जाकर के लगी स्टंप्स पे, खड़े के खड़े रह गए। और इस प्रकार से मुज्तबा यूसुफ को मिलने वाली ये पहली सफलता, और वहीं पे सोपोर स्टालियंस को भी ये पहली सफलता। पहली ही गेंद पर वहां जैसे ही सामना किया मोहम्मद मुनज़्ज़िर ने। Thank you very much, Mansoor Aziz, for watching us back home today. And Azir, our brother, is watching us. Thank you very much, Mansoor. And that's a clean bowled, beautiful delivery from Mujtaba Yusuf. He removed Danish Hilal. He is talented, no doubt about that. He's going to get better with the passage of time, Nazir. But he possesses that talent. You rightly mentioned that he's a class act. Look at that straight drive. But the next one, we know that he's gone the very next ball. It capped low, but he's got the pace. And Munazzir is gone here, so the first blood is on. And Danish is still there. He's still grounded there. He's on to 3 of 3. And Munazzir is sent packing. Danish is a serious finding. He's a wonderful corrector with the bat.
Mujtaba has his man. I still remember once upon a time I wrote a column on Mujtaba Yusuf some 5-6 years back, and I made a phone call to Mujtaba Yusuf and he responded equally, and that was assisting feedback. I still remember that column. I wrote few of the columns on different players and some of the legends. One is that Vinod Khajuria from Jammu province, and Mujtaba was among that pack. I called him and he responded, and that I still remember. That was published by the Delhi newspapers of Valley. It's 3-for-1 after 4 balls in over number 1. Couple of papers carried that story that day, as it's 3-for-1 after 4 balls down in over number 1. 2 balls remaining. It's going to be Mujtaba Yusuf to carry on and continue. Faizan Mir walks in at number 3. Faizan has shown some glimpses over the past couple of matches here, and this is the third outing for Spectrum Kings Pampur. The man behind this side is doing good job, incredibly well, bringing young blood here at the center of Bakshi Stadium, providing them a kind of platform why they can flourish, shaping for the drive. The one that was moving outwards was trying to get in position and trying to lay baton to the ball, and it goes past to the blade. It's 3-for-1 after 5 balls in first over. They are chasing 209 from their allotted 20 overs. It's Mujtaba Yusuf who's generating a lot of pace. Mujtaba Yusuf, and Azir telling me that, oh Munawar, come on, would you like to face a ball from Mujtaba? Well, I will try to cover up my body first. Here is Mujtaba one last time in this over. And down the leg side, he's got that serious space there, and down the leg side, gonna be wide. Another extra run added, 4 for the loss of 1. He has been net bowler for a couple of franchises, and he's playing outside Kashmir all the time throughout the year, and is preparing himself for big games and for tough moments, and he's trying to prepare himself. And Parvez Rasool, the only international icon from this part of the world, I mean the Kashmir province, the first one to set foot on that podium at platform, the one we call the international podium. And he is there to guide Mujtaba. Mujtaba dabs here. Faizan dabs it. Not for runs. It's a dot ball. Successful over comes to and 1 gone. It's 4-for-1. And I was just talking about that. I wrote columns on different players. I still remember one of them is Mujtaba Ahmed Bande. There is a famous player in Kashmir, in Srinagar city. He's known as Messi of Kashmir. His name is Shahnawaz Bashir, but he's from football. And Vinod Khajuria, the legendary former Ranji cricketer. It's 4-for-1 after the completion of over number 1, and someday we're going to talk about in detail. But right now we have an assignment underway here. 4-for-1 after the completion of over number 1. Mujtaba 1 over, 1 wicket, and he's gone for 4 runs. Danish Hilal scoring 3 against Mujtaba. And Faizan is yet to open his account. Munazir is back to hut. Today there is a huge change in the batting order. Faizan comes at number 3. Munazir walked in alongside Danish Hilal. There is no slip. There is fly slip, or the short third you can call it. Short far. There is short mid-on. It's Asif Rasool operating. Parvez Rasool is at mid-on. And Asif telling him, hand over the ball. Let me take charge again. The first ball, that was a dot delivery. Asif continues to operate, and that one inside the line, trying to find that fine leg area. He was trying to launch it. Yeah, he widened it. It's clearly down the leg side. Everyone knows, as it is unfolding on their screens right now. A 5-for-1. The next one somehow gets away with that one. And there is a little fumble. And he's going to chip in with a double here. He's going to pick up the second one. Good running between the wickets. Partnership they need at the moment. They're in desperate need of a partnership up front. They lost the wicket number 1 against the likes of Mujtaba Yusuf, the star bowler from superb
town of Bijbihara. Fine. Oh, there is a fumble. Gonna be runs. It's gone through the gate between the legs, and Mujtaba unable to stop the ball this time. And that's gonna be runs. Mujtaba can't prevent that one, can't stop the ball. He lost the sight of the ball. Take a look again. Cut away nicely. Oh, scare cut comes into play. And this is Danish Hilal for you. Serious talent, young lad. There's some other batters to come. Faizan and this lad, Danish Hilal. If they're guided properly, this is going to be a future prospect. And one is waiting for his turn. That is Umair Zuhur. And we need to work on these young lads, the budding talent. We need to work on it. And once the team owners understand there is an urgency, there is a need to work on this young nursery, they will get something inshallah special, and that hard work will pay off one day. We have seen that it's going to pay rich dividends. There are plenty of examples how these young lads created history, how they reshaped their career when they were groomed cautiously and when they were guided properly. And you know that exposure is important. The other thing is that proper guidance and counseling is also important. If you are counseled in the right manner, you're going to hit the charts. You're going to find something special in life. 13 for 1 after 1.5. We are in second over here. Danish Hilal has got Faizan alongside. Danish on to 10 into the double figures. Asif Rasool. There is Parvez Rasool at mid on. There is a man at mid off. Extra cover Ahmed Bande. Oh, he's going to check. He's going to play on merit. But Asif Rasool is equally and immensely talented. This lad knows how the batter is moving, where he's eyeing, what he's trying. He's going to read it properly. He read the batter in such a way that he was surprised with that extra bounce and off on that occasion. "13 for 1 after 2 overs. They are chasing 209 from their allotted 20 overs. 18 overs remaining. 104, 108 balls are going to come. 18 overs. And they are 100. How many runs behind? They are, I think, 197 behind. Is it? 95 behind. 96 behind. Here is Mujtaba again. That one, a good looking shot. Nice shape from batter there. There is Ankit and Ahmed Bande, the two men on that portion, taking charge, designing the field, and captain telling his troops, stay on toes, stay agile, as agility is an important aspect of the game. You have to be agile, on your toes, keep eyes on the ball, stay watchful. Here is Mujtaba again. The left-arm pacer from Bijbihara Town is here. Good delivery again. Better line this time. He's got those techniques to make the ball move around the batter. He can make it move outwards and bring back into the batter. Thank you very much, sir. And we have the people from line of defense, RJ Rafiq, and he's got the officer from play, Ishaq Saab is here. And thank you very much, sir. It's 14 for 1 as we are in over number 3. Nazir, you know that people from line of defense, they're doing their level best. They're on their toes since day one. Oh, look at that one. Nearly had him. Cuts him into half. What a delivery. Oh, that one is going to roll past everyone. Will it trickle into the fence? No way. It's stopping on it soon. So it's going to be runs. Couple of runs coming in the form of buys. We'll have to wait and watch for the signal. Buy signal by Balvinder Kumar Soni. So with that couple... Is it a couple? Is it a brace? Yeah, 2 leg buy. 16 for 1. This is over number 3. We are in Mujtaba Yusuf in his second over. He's gone for 5 and picked up a wicket. And you are watching JK Sports Time Facebook, moreover JK Sports Time YouTube and Red FM JK, bringing you Season 2 presented by Atwas. Match number 12 underway. Myself Munawar, I got Sheikh Nazir in the com box. 16 for 1. Chasing 209 Mammoth on a tricky surface. That's Ariel and Apish. Drop shot of a man there. And he's lucky. Danish Hilal gets away with that one in the end. But this is going to happen with the batters here. It is an easy surface, under lights. But Nazir, you have seen that this surface is
We can't guess. It's unpredictable at times. Well, he was early into the shot. If you remember that shot, it will hard to compare, but we can't compare. It's going to be contrasting. But there is a problem with Virat Kohli. He sometimes, his bat rolls in his hand and that outside edge comes out. Have you seen that? If you remember that Champions Trophy 2017, well, he was early into the shot. There's 16 for 1. But that king is of next level. He has plenty of hundreds, thousands of runs. It's 17 for the loss of 1. Guided nicely, properly. But if guided properly, these two lads have those techniques of next level or the superlative techniques. They can do wonders one day. But we need to work on this young talent. Once this talent is groomed, once it is polished, believe me, our future cricket is going to be in safe hands. ये उज्जवल भविष्य के लिए मैं समझता हूँ अगर प्रॉपर तरीके से गाइड किया जाए तो बेहतरीन ये दो खिलाड़ी हैं, फैजान मीर, दानिश अला और उमैर ज़ोहर। तो कहीं ना कहीं इस टूर्नामेंट की ये भी खासियत है कि अवसर ज़रूर मिले हैं, ऐसे युवा खिलाड़ियों को एक प्लेटफॉर्म मिला है और वहाँ उनकी पहचान हो रही है जो स्पेक्ट्रम्स के साथ खेल रहे हैं। हालांकि कुछ अन्य ऐसे भी खिलाड़ी हैं, युवा खिलाड़ी जो बाकी डिफरेंट क्लब के साथ खेल रहे हैं, डिफरेंट क्लब्स के साथ खेलते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत सारा टैलेंट है और ये एक और फाइंडिंग है। अगर जिक्र करें हम जे के स्पोर्ट्स टाइम और रेड प्रीमियर लीग के, तो कहीं ना कहीं शायद ये गलत नहीं होगा। बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं दानिश अला और फैजान मीर, और दिग्गज खिलाड़ियों के सामने इस प्रकार की प्रतिभा, इस प्रकार की कला का शो करना मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। स्पेक्ट्रम किंग्स 18, 1 विकेट पे 3 ओवर की गेंदबाजी, मुजतबा यूसुफ 2 ओवर 7 रन 1 विकेट, और बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी उन्होंने की है। दानिश अला 11 पे 12 गेंदों से, फैजान 3, नेवर की शुरुआत। और देखा जाए तो निश्चित तौर पे देखिए आसान परिस्थितियाँ रहती नहीं हैं, क्योंकि जब कभी भी आप किसी भी कार्य में उतर करके उस कार्य को बखूबी अंजाम देते हैं तो हार्ड वर्क, डेडिकेशन ज़रूरी है। और सफलतापूर्वक जब आप ईमानदारी के साथ मैं समझता हूँ काम करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं आप जो है सफलता के द्वार खोलने में सक्षम हो जाते हैं। चलिए, धन्यवाद करना चाहेंगे सभी श्रोताओं का, सभी व्यूवर्स का, सभी अपने सुनने वालों का, यहाँ हुए दर्शकों का, पूरी टीम, पूरी मैनेजमेंट का। एक बेहतरीन शानदार प्लेटफॉर्म एक बार फिर प्रोवाइड किया है जे के सुपर सीमर रेड प्रीमियर लीग सेकंड एडिशन में। आसिफ रसूल, अगली गेंद इस बार अच्छी गेंद थी, हालांकि खेला ज़रूर पर सीधे फील्डर के पास। आसिफ रसूल में वो क्षमता है, वो वेरिएशंस उनके पास हैं, विविधताओं का बेहतर इस्तेमाल करते हैं, वो कला है उनके पास, एक अनुभवी गेंदबाज है, बहुत ज़्यादा अनुभव उनके पास है। तो ऐसे में पिछले 10-15 वर्षों से क्रिकेट खेल रहे हैं, इस बार उठाया खूबसूरती के साथ। नो मैंस लैंड में पीछे खिलाड़ी आ रहे हैं, क्या रोक पाएंगे? जी हाँ, जब तक गेंद को रोक लेते संभवतः वहाँ पर बाबा और उन्होंने उवैस बाबा ने गेंद को फील्ड कर लिया, पर रन संख्या। तो जिक्र हो रहा था कि दानिश हिलाल और फैजान मीर में क्षमता है, पर यहाँ से आपको संयम और आत्मविश्वास, धैर्य के साथ बल्लेबाजी करनी होगी। गेंद की मेरिट के हिसाब से गेंद की पिच तक पहुंचना होगा, स्ट्रोक ऑफर करने होंगे, खराब गेंदों को सही नसीहत, अच्छी गेंदों का सम्मान, और एक मानसिकता, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ आपको बल्लेबाजी करनी होगी। एक और बेहतर स्ट्रोक नहीं है, गेंद सीधे फील्डर के पास। एक समय में ऐसा लगा कि शायद गेंद वहां फील्डर को पार कर जाएगी, पर ऐसा हुआ नहीं, सीधे फील्डर को थमा दे। और जिक्र हो रहा था फैजान मीर और उनके साथी खिलाड़ी का, एक अच्छी साझेदारी, पर यहाँ एक बार फिर उस आत्मविश्वास की कमी ज़रूर दिखी। ऐसे गेंदबाज आसिफ रसूल के विरुद्ध जो अनुभवी गेंदबाज है, ये सीधे थमा दिया वहाँ पर फील्डर को, और इस प्रकार से एक और विकेट मुजतबा यूसुफ ने यह किया इस लब का, और दूसरा विकेट संभवतः यहाँ पर गंवाया है टीम ने। सोपोर स्टैलियंस का 209 का जो आंकड़ा उन्होंने दिया है इस टीम को जीत के लिए, और उसका दबाव भी है, साफ नजर आ रहा है, क्योंकि रन गति बढ़ाने की आवश्यकता है। शुरुआत में आपको आक्रामक शैली से रन चाहिए, एक छोर से तो रन बनाने जरूरी है, दूसरे छोर के आपको समर्थन देना होगा। अरे ये निराश कुछ चेहरे निराश कहानियां बयान कर रहे हैं, कुछ चेहरे जो हैं उत्साहवर्धित भी हैं, क्योंकि सोपोर स्टैलियंस के फैन काफ़ी उत्साहवर्धित होंगे और ऐसे में स्पेक्ट्रम्स के जो हैं वो निराश होंगे। तो ये निराश हताश चेहरों की कहानी बयान करती है ये क्रिकेट के प्रति उत्साह, ये क्रिकेट के प्रति जुनून है, ये अपने चाहने वालों के प्रति जो उत्साह मैं समझता हूँ वो खेल की भावनाएं आपको लेकर के यहाँ मैदान में आती हैं। And that's attracting them, and it's a good thing to see that we are facing, that a potential threat of one potent, that is the drug menace, and the only way to find something that's gonna save us from that
corrosion, I can say. Can we use that? And we have to find that coating over it. It is to use this one. This is the only formula I can say. And we can overcome that problem and hand them the bat and pen and let them flourish. And it's 20 for 2 and can't keep that one down. He misread that one up the surface. He thought it came on a good pace. But that did hold up a bit. Left alone, over Shah, the very first ball. Shah has got that experience. He has played basic level cricket and he knows how to operate under certain circumstances. One thing remains to be seen. It's pertinent to mention this lad, if he has played the basic level cricket, he has that maturity, he has that sense how to build that partnership. The damage is already done. Now he need to work on it. He has to do that repair work. And you know that something is better than nothing. Like that too, we call it, one is that rubbing salt against fresh wounds. One is to dress up these wounds. He need to do that. The damage is already done. As they are 2 down, they are dented early with 2 blows earlier on. Now they need to work on it. Danish Hilal and Uvesha need to put their heads down, stitch a partnership, take it step by step, over by over. Look, if you can't find that mark of the triple figure mark of 209, which is the magical figure to touch, at least try to find somewhere, finish somewhere close to that mark. That's going to give you confidence. Playing on a bigger stage where there are multiple websites, there are multiple channels covering you guys. They're giving you the coverage. There was a time when there was no coverage at all. There was nobody to cover. And nowadays you have plenty of camera persons over there capturing each and every moment. You were going like this and that. You were agile and you were showing laziness. Everything is being captured. All the moments, the ecstatic moments, and those moments where you feel that sadness, the tensed moments, which we call the agony. And it's 20 for 2 after 4 overs. The fresh over begins. Zanagir Express into the attack. He has that pace to tease and annoy. He can unsettle the batters. He has that knack of picking wickets at times. He can be expensive. We have seen that over the past couple of years here in this part of the world. Sometimes he loses his length all of a sudden. He loses his way. He has lost that way multiple times. But this season I have seen this lad is bowling in the right areas. And it was impressive in Royal Premier League few days back. He bowled a couple of maiden overs on the trot. In a game I saw 2 maiden overs. Can he replicate here? He's playing under the leadership of international icon Mr. Parvez Rasool, who has that caliber of next level. Look at that one, trying to drive straight down the ground. Didn't connect that shot. And he's punching his bat there. It's better to step a little bit outside crease. The way we saw Ahmed Bande and Fayaz Sarwar, they were batting a little bit outside crease. That too against the likes of Mohammad Mudassir. The first one to receive the call from any IPL franchise to become their net bowler. And the way they given the charge against the likes of Mudassir, and he was lost. He lost his mind. It was a kind of brand fade moment that where to pitch and where to bowl. Some of the quality shots we saw. Look, there is a celebration as he's given out. Umpire raises the finger and Uvesha is caught behind. We're just talking about that. Zanagir Express. He has that potential and he's a potent weapon. He can be threatening. Here comes wicket number 3 and Uvesha is gone. The effect of pace is going to be there. Take a look. Yes. Extra bounce in the end. Little deviation outwards. And he gets his man. He's pumped. He's delighted. He's going through good run nowadays. He's hitting the purple patch in a day in, day out. And it's been another great evening to start with, where he finds his man. That too in the form of Uvesha. A bowler would love to get rid of a batter like Uvesha who's played the basic level cricket. And these are the kids enjoying. You have your moments. Oh, it reminds me of childhood. Oh, you're taking me back, believe me. Oh, dear kids, may Allah bless you. They're dancing at the moment. But if guided properly, believe me, they're going to be the future stars. To take care of society, we have to work on it. And this is our future generation. Back to the game, 21 for 3. It's taking me back to the childhood memories. Gone are the days. We can't go back because this is the law of nature. You get birth, baby, then a kid, then grown up, teenager, adult, and going through that
40s, then into the old one, 21 for 3. We're into the 5th over. Ervis Baba again to Asif Jilani, the owner of club, Asif Jilani, who brought this club here. He's the man behind this team, Asif Jilani. I think, yes, he is the man behind this Spectrum Kings. The name, it's so big. The Spectrum, the Kings, the Spectrum, the Vibgire. They do have the variety in the lineup, no doubt about that. Talking of the word Spectrum. And the Kings mean, you know that they're controlling any particular area and they're ruling that. Or down the leg side. And yes, he's coming from Pampur. That's called the Saffron Town of Valley. Down the leg side, good collection, brilliant stop. Fitness is also important and equally important. Stay fit as fiddle. Agility is there. He puts in a full-length dive to his left, not his natural side. And taking control of the ball, quite commendable from wicketkeeper there. West Baba continues to bowl. Little attendance here. It's little cool at the moment, but there is humidity in air. Air is little denser at the moment. 3 for 21. The last ball of the over coming up. Goes back in crease. The passion for the game, the love for the game of glorious uncertainties, the gentleman's game. Look at Asif Jilani. He continues to admire and bringing in younger generation, and handing them bat and pen. That's a good sign. These are the positive signs. When somebody in the society is doing this, believe me, that's going to be a step towards betterment. We can only progress, we can only prosper when we have that pen in hand. And the other thing is the bat should go hand in hand, because a sound mind lives in a sound body, and that's going to only come into play, into equation, when you work on the basics, when you keep yourself fit, when you stay away from all the social evils and that drug menace. 21 for 3 after 5 overs. We're going to be in over number 6. They're in desperate need of a partnership. They need desperately a partnership here. The damage is done. As I earlier mentioned, that they need to repair. They need to resurrect here. Resurrection is needed. And this is the international icon. The one who set the standards and the bar very high, telling others to come in and compete. You can have the bright future. Can I say that gone are the days, kheloge, koodoge, ho jaoge kharab, padhoge, likhoge, banoge nawab. To some extent, I won't say that knowledge is but knowledge is very much important. It's pertinent to mention that without knowledge, we can't do anything. And it's 21 for 3. We're into the 6th over, the last over mandatory power play. Shaping for that slog sweep. Eyeing that mid-wicket area. Unable to connect it properly. Not a clean connection. Zishan Zur has got ball in his hand. Another talented left-arm spinners. And this season we have seen that left-arm spinners are dominating. RPL and a tournament here at TRC. Now here at RPL 2. Spinners are dominating. And left-arm spinners, they're calling the shot. That one dabs it away. 22, static at 22. They need to break free, need to look for ones and twos. And this is how you can build that partnership. You have to design that pattern, look for ones and doubles. Once you're able to rotate, things will start working. And that will allow you guys to bat freely, with freedom. Goes for that paddle sweep. And that's gone behind wicket keeper. Just a single. Oh, it's a wide. And that means he need to reload and re-bowl. An extra ball is coming up. An extra run added to the tally. 24 for 3. Asif Ramzan. Brilliant wicketkeeper batter who's up to the stumps. Not letting Danish Shalal to go after the bowler. This time guided nicely. What a shot there. Dropping his wrist. And plays it to perfection. He's going to get 4 more runs there. And with that, there is addition to the tally. We're just talking about that. That they need to rotate. They need to keep going, and look at that. Guided nicely. Execution. Class and the resilience. Look at that shot once again. The way he guided that one with the angle blade. Oh, composure and control. Well composed one. There was a batter who used it to late cut, who used it to dab it bit late down to the third man, run it down to the third man. This one is going to go down to the backward of scare. There is production.
Only 2 runs accrued with that brace. He keeps it down to 2. Well, talking about, there was a batter, his name is Inzamamulak. He used to go with those late cut shots. He used to dab it late. Those were delicate shots. I was known for those shots. He used to run it down to the third man. It's 28 for 3, halfway mark in 6th over. Oh, look at that. What a timing and what a shot. But find his man at long off. There was man stationed, but the way he picked it up nicely. Cleared the man at mid off, but there is a man at long off area. 31 for 3. The last ball of power play is coming up. Zishan in his very first over, he's gone for 10. That's aerial, that's Apish, that's in the gap. What a shot, lovely timing this time. Asif Jilani, the owner of club, gets 4 for that. It's Asif Jilani with that wonderful shot straight down the ground. Oh, the man at mid on, and cleared that mid on fielder with ease. On drive. Plays it to perfection. Precisely done. Gets 4 for that. Zishan gone for 14 of his very first over. Done with power play. Completely owned by Sopore Stallions. And they are on top at the moment as they remove 3 of the batters. It cost them 35. And they picked up 3. And look at the small kids over there. They're enjoying. Keep going. Keep doing this. Well, they're enjoying. Thank you, cameraman, for bringing these guys on screen right now. These kids, they're enjoying the moments here at Bakshi Stadium. The iconic one. The historic venue. 3 for 35. Baba is going to carry on and continue. Change of voices. Over to you. धन्यवाद मनवर. 6 ओवर समाप्त. 35 पे 3. दानिश हिलाल 20, आसिफ जिलानी 4. ओवेस बाबा एक और ओवर लेकर 1 ओवर 1 रन 1 विकेट, यह आंकड़ा है उनकी गेंदबाजी विश्लेषण का. दूसरे ओवर की शुरुआत कर दी है. 1.1 ओवर 1 रन 1 विकेट. 12.58 रिक्वायर्ड रन रेट. 5.68 प्रति ओवर के हिसाब से रन बना रही है टीम. 35 बने हैं 3 विकेट पे. 7वें ओवर की गेंदबाजी. दानिश हिलाल 20 पे 18 गेंदों से 209, एक विशाल पहाड़ जैसा लक्ष्य सामने, क्योंकि यहां से एक बड़ी पार्टनरशिप की आवश्यकता. अच्छी गेंदबाजी हो रही है स्टंप्स पे. यहां आपको रनों की आवश्यकता है, यहां पार्टनरशिप की आवश्यकता है. अरे इन युवाओं को एक अवसर मिला है इस टीम में, स्पेक्ट्रम किंग्स क्रिकेट क्लब की अगर हम बात करें तो ये इनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है. पर अपने उस टैलेंट को, अपनी उस कला का बेहतर प्रयोग करें. अलग बात है परिणाम आपके हित में आए ना आए, पर जो आपकी क्षमता, उस क्षमता को 100% यहाँ दर्शाना होगा. तब जाकर के आप बड़े स्तर तक पहुंचने का एक ख्वाब देख सकते हैं. और ये बेहतर, खूबसूरत, शानदार स्ट्रोक है. पर रन ज़्यादा मिलेंगे नहीं क्योंकि पीछे फील्डर तैनात आदिल काचरू. केवल 1 रन मिलेगा. रन संख्या 35 से बढ़कर 36. 3 विकेट पे 7वां ओवर. 12वां मुकाबला जय के सुपर सीमेंट रेड प्रीमियर लीग सेकंड एडिशन 2025 प्रेजेंटेड बाय अथवास. दूसरी पारी, पहली पारी में सोपोर स्टैलियंस ने 208 बनाए थे 20 ओवर में 4 विकेट पे. 209 रनों का विजयी लक्ष्य. 36 बने हैं 6.3 ओवर की गेंदबाजी में. ओवेस बाबा एक और बेहतर गेंद, एक और खूबसूरत गेंद. सम्मान दिया बैट और पैड मिला करके आसिफ जिलानी, जो कि 4 पे नाबाद हैं. अभी तक उन्होंने 5 गेंदें खेली हैं. 36 पे 3, 7वें ओवर की गेंदबाजी. इस ओवर में अभी तक मात्र 1 रन आया है पिछली 4 गेंदों से. एक शानदार और बेहतरीन क्रिकेट मुकाबला. आसिफ 4 पे, दानिश हिलाल 21. ओवेस बाबा, ये उनका दूसरा ओवर है. आसिफ रसूल ने संभवतः 2 ओवर की गेंदबाजी की है. उसके अलावा मुजतबा यूसुफ ने 2 ओवर की गेंदबाजी और जीशान जहूर ने 1 ओवर. यहां कुछ रन जरूर. एक सिंगल मिलता हुआ 1 रन के साथ रन संख्या में वृद्धि. इक्कीस पे दानिश हिलाल, आसिफ जिलानी 5 पे, 37 पे 3, 6.5 के बाद स्पेक्ट्रम किंग्स क्रिकेट क्लब
सोपोर स्टैलियंस के विरुद्ध दबाव में जरूर है टीम, क्योंकि 3 विकेट गंवाए हैं, 7 सुरक्षित अभी भी हैं बड़ी पार्टनरशिप के, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट 13.06 तक पहुंच चुका है। इस ओवर में मात्र 2 सिंगल आए हैं, 2 रन मात्र आए हैं ओवेस बाबा के इस ओवर से। एक और सिंगल मिल जाएगा अंतिम गेंद पर। ओवर से आए 3, 7 समाप्त, 38 पे 3 सोपोर स्टैलियंस क्रिकेट क्लब। 84 की पारी अहमद उमर बांडे ने खेली, उसके अलावा फयाज सरवर ने भी एक बेहतरीन पारी खेली 30-40 रनों की। आसिफ रमज़ान ने अंत में वो ताबड़तोड़ प्रयास किया, और उसके अलावा कुछ अन्य दीगर पारियों में भी छोटा छोटा योगदान जरूर रहा बल्लेबाजों का सोपोर स्टैलियंस के लिए। और 208 तक पहुंची 4 विकेट पे 20 ओवर में, और 209 का न्योता शुरुआत में ही लड़खड़ा गई पारी। 3 विकेट अभी तक 38 पे गंवाए। इस जोड़ी ने एक छोटी सी साझेदारी जरूर निभाई है, पर इस साझेदारी के चलते आपको इस लक्ष्य तक पहुंचना है तो फिर यहां से रन बनाने होंगे, और एक छोड़ से आपको बल्लेबाजी करनी को कुछ अतिरिक्त जोखिम जरूर उठाने होंगे, क्योंकि 13.15 तक रिक्वायर्ड रन रेट पहुंच चुका है। 8वें ओवर की शुरुआत होने जा रही है। जीशान जहूर 1 ओवर 14 रन खर्चीले साबित हुए थे, दूसरा ओवर उनका, और 8वां ओवर सोपोर स्टैलियंस के लिए। लीजिए, पहली गेंद पर वहां बोल्ड कर दिया जीशान जहूर ने, दानिश हिलाल को 22 बनाए, 22 गेंदों का सामना किया, 38 पे चौथा विकेट 8वें ओवर में। Danish got to go. Watch that, what happened on that occasion. That's another growing problem nowadays. Look, he barged onto the field. It didn't rise, it kept low. And you can't afford a slog sweep when ball keeps low. And look at the boy from one end, runs onto the field, shaking hands with somebody there, and now crosses that fence. Well, I still go through those cricket classic matches of 90s when people used to invade the field. Gone are the days, but it's conventional here. It's a daily routine in this part of the world. They often barge into the stadium like this and trying to handshake with the players. Some of them try to pose before the cameras, capturing those selfies and the moments. It's better to do all this beyond the boundary line. You have all the time in the world, ample time in the world to capture those moments. But this is disgusting when you walk onto the field. It's gonna disrupt sometimes, it's gonna disturb the scenes. This isn't good at all. Well, this is gonna hurt the sentiment of cricket or the gentleman's game, and the spirit of game is being violated. Thank you very much, sir. And back to the business. And look, this lad has got a lot of energy there. He's still going in his own style. Here's that energy. But talking about that slog sweep, well, his own choice. Eyeing a big shot, trying a big shot, bounce wasn't there, and is cleaned it up. Is castled by Zishan. And the batters from Spectrum Kings need to replicate what their opponent did earlier on this evening here at Bakshi Stadium. Umar, this is another finding of JK Sports Time and Red Premier League Season 2. Umar Zuhur, what can he do today? I still remember that wonderful knock, that well composed at 47 in the first game. That was so nice. Look, this is the good thing about this lad. This is called the positive intent. Not just the aggression is there. He knows how to bat. He has those proper skills of dealing with the spinners and the pacers. Right now we're watching Zishan, who's operating at the moment. Look how he gone on to the front foot and keeping that turn and the drift away, driven straight. A copybook shot there. Asif Jilani is joined by the young lad Umar Zuhur. He walks in number 6. Asif on fire for 8 balls. Look, the foot movement is there. It looks like that Asif has played in his early days. He has played a lot of cricket. Looks like the way he's getting to the pitch of the ball. And the passion, the love for the game. That just sums up the story. It just summarizes it. That this lad has been the part of gentleman's game. And he's still part of it. 40 for 4. 8th over. Recovery is what they need at the moment. Now Umar trying to slog it away. He gets away with that one. Gonna look for second. He's gonna come back.
Good running between the wickets. Umar has that role to play now. He has to anchor the innings as their side is in a kind of trouble here. They are in shallow waters. He has to stand up. He has to step up to the occasion and stay grounded. He has to stay cautious and try to play the ball on merit, as there is huge responsibility on his shoulders, at least to try to find some runs here. There is good attendance. We want to see somebody stepping up early into the shot there. There is Ankit Narwal, the hero in local cricket back in Delhi, but failure today this evening here at Bakshi Stadium. That's why I often speak that focus on the local talent. When we allow them to express themselves, then they can express. When we are not allowing them, when we are not ready to provide them a platform, how they can get that exposure? I don't think they will get used to the conditions. They won't learn these things. Even Yashgak told me that the temperament isn't there. That's lacking. And that will only come into play, and that the Kashmir-based cricketers, they can only imbibe it when they share the dressing room with some of the big names. Like today we have seen in the Sopore Stallions side. And there should have been local lads alongside the team to learn what are the tactics. Now Parvez Rasool has got the ball in his hand. Aidan, the captain of Sopore Stallions. Umar, the first ball, driven handsomely. Good looking shot. He's going to pick one. And it will be interesting. It will be good to see and watch how Umar will bat against the likes of international icon. It's going to test Umar and his skills, and that will also allow Umar to introspect what should be done, how to make himself more potent against pace and spin. Oh, that one, he was trying to sweep the ball. Shaping for the sweep shot, doesn't connect. Wicketkeeper whiffed off the bails. 4 for 44. 9th run away. The required rate gone up to 14 now. It's getting out of reach. And it's heading towards that mark we call it. Oh, that's gone. He's cleaned him up. And Parvez Rasool removed Asif Jilani. Little smile on his face. He gets his man, and Asif Jilani is on his way back to pavilion. Take a look again. Just go through this one again. Watch this. Oh, look at that. He's played on. He's dragged on, chopped on, gone on his way. Of the inner splice, unable to keep it away. Bit late to respond. Sopore Stallions in a kind of a hurdle. Parvez Rasool, he has got that lineup alongside. Boys are looking positive. That's the good thing. These are the good signs for Sopore Stallions. This season, at least they qualified for the quarterfinals everywhere, I think, in most of the tournaments, but they lost at the fag end. Unable to barge into the semi-final, unable to make it to the semi-finals. That was another important, that would have been another achievement. But getting out of the events in Super 8 stage, and this time round they will be eyeing something special. Can they go past that quarterfinal Super 8 stage? And that's another thing people are looking forward. And to me, that's another aspect that remains to be seen. As of now, it's unseen, and we're gonna wait for that. We have to hold on for a while, for next couple of days. And that brings Azmat Rishi. Azmat will bat against the likes of Parvez Rasool, giving young lads a chance, an opportunity. Good move. Azmat, what he's going to do now against the likes of Parvez Rasool, who's having tons, loads of experience. Azmat, deep increase, keeps it away, works it away onto the onside. Look, these things, one thing is going to be crystal clear. The phobia is going to come to an end. The phobia will be gone this evening. Once they face the Parvez Rasool,
And you know that when somebody hears that there is an international icon and he's given the bat, all of a sudden face this lad, he will be facing that kind of a kind of threat. There will be a kind of phobia in his mind going on. He will feel that kind of fear that how I'm going to bat against the likes of Parvez Rasool, who has represented country at highest level. And when he bats, when he keeps it away, and he's going to get rid of that fear, and that's going to give him extra bit of confidence. And once he's gaining that confidence, once he regains that power and resilience, believe me, he's going to face any big cricketer and he can do wonders. And Azmat now trying to slog it. Doesn't connect. Ninth one done, successful over comes to an end. 46 for 5 after 9 overs. And we're going to be in over number 10. And Azmat was trying to break free. I was talking about that. Allow these young lads to bat around, to play alongside these big names. Let them excel. If you want that future nursery to groom, if you want to see them growing day by day, gaining experience, getting used to the conditions, let them express, and that will also expose their talent. And once they're exposed, that will provide them the platform. People are going to be there to grab. Clubs are there now in making. 46 for 5 to 9 overs. 11 overs are going to come. 66 balls. JK Sports Time bringing you the live broadcast on Facebook. Moreover, JK Sports Time YouTube. Those who are new, you can subscribe and press the bell icon. And we're also available in Play Store nowadays. You can install the app and avail the benefit. Talking about the YouTube channel of Red FM, it's Red FM JK. On YouTube, you can also find the coverage there. 46 for 5 after 9 overs. We have plenty of channels broadcasting this game. It's another achievement. That's another good thing about the tournament. Regarding this event, that makes it more special when you have a couple of channels there to carry all the headlines, news, the headlines, the columns, and some podcasters and short interviews. 46 for 5 after 47 for 5 after 9.1. We are into the 10th over. And the importance of podcast, and I still remember recently I heard Dinesh Karthik saying that I worked hard to be part of that podcast. That is the importance, to surface there and to flourish in it. Getting a call up for that. 47 for 5 into the 10th over. Here is Zishan Zahoor again. He's in his 3rd over. Azmat cuts it and cuts well. There is Mujtaba, who denied any possibility of a single. We're into the 10th over. The asking rate is nearing in on. Oh, it's gone past 15 an over now. It's getting out of reach. It's getting tough. And it's going to be an uphill task. Tough ask. Good looking shot straight down the ground. Azmat. He was playing for which side? He was playing for Summerbook Stars. The club owned by Feroz Ahmed. But someone else. And there is someone else. But the good thing and the positive sign that these young lads are getting someone to back there. And he was part of Summerbook Stars in that under-19 league. And Omer, was he playing in that tournament? It's 48 for 5. Which side? And you forget that. Look at the shot. Look at. That is the beauty of the man. That's what I was talking about. Here is that quality cut shot. And that's the reason he's going to hit the headlines one day, believe me. He's going to make his mark. Oh, look at that. Scared driven. Gets 4 for that. Full marks on that. And against the likes of Zishan Zahoor. Not an easy customer, but a quality shot. To Ahmed Zahoor on to 11 of 7 balls. And he has to reload and re-bowl that one. Parvez Rasool trying to ease up his nerves as Zishan, the young lad. Keep going, young man. Keep going. It's 52 for 5. 50 up. As we watch it. Oh, look at that shot again. Lures into that shot. And plays it wide of the man. And he's going to look for the second. Good running between the wickets. And with that brace, there is addition to the tally. 54 for 5. It's just like that. Aram se, young man. Aram se. Keep going.
There is no need to hurry. Your comments. अच्छी बल्लेबाजी, बेहतर तरीके से उमैर ज़ोहर कर रहे हैं बल्लेबाजी, और निश्चित तौर पे प्रेरणा मिलेगी इन युवाओं को और अवसर भी मिलेगा, और मैं समझता हूँ ये अच्छी बात है। ये परिणाम आपके हित में आए ना आए, पर जो आपकी क्षमता है, जो आपकी कला है, जो आपकी स्ट्रेंथ है, आप उस कला का प्रयोग कीजिए। मैं समझता हूँ वो बड़ी बात है, क्योंकि मुकाबला जीत और हार जो है ये खेल का अंक है। एक टीम के पक्ष में जीत आएगी, एक के पक्ष में हार आएगी, पर सबसे बड़ी चीज़ जो है वो आपको अपनी कला का प्रयोग करना है। इस बड़े प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे अवसर मिला है खेलने का, तो वहाँ अपनी वो क्लास दिखाएं, अपनी कला दिखाएं, अपनी वो क्षमता दिखाएं, तो वो आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। और यहाँ स्पेक्ट्रम किंग्स के जो युवा खिलाड़ी अजमत रेशी है, उनके साथ उमैर ज़ोहर हैं, बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, पर वो जो अपना 100% जब आप मैदान के अंदर देते हो, तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं वो आपकी सबसे बड़ी, जो मैं पहले भी जिक्र कर रहा हूँ कि वो आपकी सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है, आपके अंदर जो क्षमता है, आपके अंदर जो टैलेंट है, कला है, जो आपका पोटेंशियल है, उसको प्रूव करना है, उस मेटल को प्रूव करना है, तो वो आपकी जीत है, बजाय इसके कि आप यहाँ मुकाबले की जीत के पक्ष में जाएं। हालांकि जीत और हार खेल का हिस्सा है, पर अच्छा क्रिकेट, बेहतर क्रिकेट खेलना होगा यहाँ पे इन युवा खिलाड़ियों को। स्पेक्ट्रम किंग्स क्रिकेट क्लब 209 रन बनाने हैं जीत के लिए। यहाँ 10 ओवर की गेंदबाजी में 53 बने हैं, 5 विकेट खोए हैं, और सोपोर स्टालियन ने 208 रन बनाए थे। आज अहमद वाडे की वो बल्लेबाजी, 60 गेंदों से 156, तिरपन पे 5, तिरपन पे 5, 60 गेंदे, 156 रनों की आवश्यकता। और सबसे बड़ी चीज़, जो युवा खिलाड़ी हैं, बहुत ही बेहतरीन अनुभवी खिलाड़ी दूसरे छोर पे सोपोर स्टालियन के, और उनके साथ इसमें मुकाबला खेलना इस बड़े स्तर पर, उनको यहाँ पे एक चुनौती देना, ये बड़ी उपलब्धि है इन युवाओं के लिए। 53 पे 5, 60 गेंदे, 156 रनों की आवश्यकता। उमैर ज़ोहर 12 पे 9 गेंदों से, अजमत रेशी 2 पे 15.60। रिक्वायर्ड रेट काफ़ी ऊपर पहुंच गया है, ये 15.60, 15.5 से भी ऊपर। कठिन रास्ते हैं, कठोर रास्तों से गुजरना है, पर देखना होगा कहां तक पहुंच पाएगी स्पेक्ट्रम किंग्स क्रिकेट क्लब। हालांकि जो क्रिकेट है ये महान अनिश्चितताओं का खेल है, पर ये बेहतरीन बल्लेबाज उमैर ज़ोहर, उनके साथ अजमत रेशी, आने वाले 10 ओवर में किस प्रकार से बल्लेबाजी होगी। स्पेक्ट्रम किंग्स की 12वां मुकाबला जेके सुपर सीमेंट प्रीमियर लीग सेकंड एडिशन 2025 प्रेजेंटेड बाय अथवास। 10 ओवर का खेल बचा है, 60 गेंदे, 156 रन बनाने हैं, और 53 पे 5। आधी टीम पवेलियन लौट चुकी। And 56 behind from 60 balls. 156 needed from 60 balls. We are going to be in over number 11 and 53 for the loss of 5. You know that this is the game of glorious uncertainties. We have Umar Zuhur and Azmat Rishi in the middle. Azmat Rishi and Umar Zuhur. Umar is showing that glimpse, that caliber. He possesses some serious talent and class. He's technically sound. It is a long time. He's got ample time and all the time in the world. Needs some attention. Hope that Asif Jilani will take care properly. Will work on his skills. Let them train under the mentorship of someone like Parvez Rasool, who has played the basic level cricket and represent the country at highest level. He has picked up 7 wickets in a 3-day game where he got rid of some of the quality batters from Aussies, the Kangaroos, known for a reason. It's 54 for 5. Fly turnover undriven. Is he going to look for the 2 here? Is he going to look for double?
Here is the next one. Cuts that one and cuts well in front of square on the off. Good cricket. These two are trying to maintain the discipline now. They're trying to resurrect. They need a partnership here. Rebuild it again. Can they do that? They are capable and they can do this. Umar on strike. And there was a kind of a big miss. Draws him forward. Drawn him into that drive. Drawn forward. Unable to keep that one away. He's missed that one. Zishan Zahoor. Young lad facing the likes of Parvez Rasool. He's of tall stature. Parvez Rasool. And that one goes for that sweep shot. Could only manage one for that. With that single there is addition to the score. It's 56 for the loss of 5. I think just a ball remaining in this over. It's 57 now. There is addition. Little attendance this evening here. Most of them coming for Parvez Rasool. And other lads too. They want to see their icon here at this iconic and wonderful Bakshi Stadium. An extra ball is coming up. Azmat decided to take him on. There is a man at long off. Should be taken. Unable to take control of that. It was hit hard. He gets 4 for that. Azmat Rishi gets 4. And with that boundary, it's 62 for the loss of. And take a look again. There is a different angle. Oh, look. Oh, that's given as a 6. It's gone on. Did it bounce on the full? Well, he's going to change his decision once again. It's going to be 4. I threw it out earlier on, but there was a TV umpire check going on. So it dropped a little short of that boundary cushion. So that's going to be 4. Couldn't turn over, and Azmat Rishi, he thought that this is in my radar. He takes it on. Would have been a good catch. Fielder trying his level best there, but unable to control the ball. Can't drag it back into the play. Can't save 4 runs. And it's going to be spin from. We saw the spin from Southern Pavilion and now from Northern Pavilion, and another spin, another left arm. Into service. Here he's coming up with the ball. Azim Kazi has got the ball in his hand. And the first ball from Azim. He's welcomed with a wonderful 6. Even for 1 straight away by Umar Zahoor on to 20. Showing those serious applications here. One is that. Oh, that slog sweep. Quality. Copybook. Proper cricketing shot. 141 away from 53. Azim Kazi belted for 6 onto 20 of 13. Umar Zahoor once again getting into the act, wanted it in the stance again. But this time gets hit on the pad. Comes forward. Looking at that surface. It didn't rise. It kept low. It keeps low. 141 behind. Smart cricket. A nice comeback from Azim Kazi. And these things will make this lad stronger. And he's gonna learn the tactics. He's gonna come up with another power pack performance. And later on he will watch it in a video that what was going on. And why it went wrong. And that one stays too low and goes on to hit the timber. Well, going with that cross bat again, that isn't good at all. Look, Parvez Rasool talking about the same thing. It kept low and beneath the bat going on to hit the timber. And Umar Zahoor is removed. He's gone here. One more bites the dust. Take a look again. Oh, there wasn't too much bounce. Misread it completely. And from the crease, he was trying to launch it. And Azim Kazi has his man. Here's the last love for Umar Zahoor and he's gone. बोल्ड होकर के वापस लौटे अजीम काजी की गेंद पर नीचे रहती हुई गेंद
और थोड़ा क्रीज छोड़कर बाहर निकले जरूर थे, एक बड़ा स्ट्रोक खेलने के प्रयास में अपना विकेट गंवा बैठे उमर जहूर। पर एक अच्छे क्रिकेटर आजमत रेशी 8 पे 68 पे 6, 141 चाहिए 50 गेंदों से। ये सफर जो है मुश्किल से मुश्किल होता हुआ टीम स्पेक्ट्रम किंग्स क्रिकेट क्लब के लिए, और तीसरी हार होगी यदि यहाँ से ये मुकाबला हारते हैं। हालांकि आसान नहीं है यहाँ से जीत अर्जित करना 50 से 141, जहाँ पर एक जुझारू बल्लेबाज चाहिए जो जुझारू रूप से बल्लेबाजी करें, अटैकिंग क्रिकेट खेलें, विस्फोट करें, और हर ओवर से करीब करीब 17 रन बटोरने हैं, 16.92। तब आप कल्पना कर सकते हैं या आखिरी कुछ औपचारिकताएं बची हैं, 4 विकेट दूर है, मोहम्मद मुदस्सिर आए हैं, हालांकि वो भी बड़े स्ट्रोक खेल सकते हैं। पर यहाँ परिस्थितियाँ कुछ अलग प्रकार की हैं, दबाव में टीम है और अकेले दम पे किस प्रकार से यहाँ से आगे चलाएंगे इस पारी को, आसान है नहीं। पर एक आक्रमण जरूर करना होगा, एक कोशिश जरूर होगी, एक प्रयास जरूर होगा, थोड़ा नजदीक पहुंचे, इस मार्जिन को थोड़ा कम करें जो 141 रनों का है 50 गेंदों से, उसको थोड़ा कम करने का प्रयोग जरूर होगा मोहम्मद मुदस्सिर और आजमत रेशी का। स्पेक्ट्रम किंग्स 68 पे 6, अच्छा क्रिकेट। 12वां मुकाबला, 3 मुकाबले आज इस प्रतियोगिता में। पहला मुकाबला आज सुबह सुल्तान वॉरियर्स ने हारा, जीत अर्जित की अथवास इंडिया ने। दूसरे मुकाबले में सुपर ओवर में मुकाबला चला गया, ये लोअर फुल टॉस डीप स्क्वायर लेग की ओर खेला है, एक सिंगल मिल जाएगा, फील्डर तैनात हैं। 68 से बढ़कर 69, 6 विकेट के नुकसान पे 11.5 ओवर की गेंदबाजी, 140 चाहिए 49 गेंदों से। दूसरे मुकाबले में सुपर ओवर में वो मुकाबला चला गया जहां 2 छक्के 1 चौका उस सुपर ओवर में 14 रन बनाने थे खालिद भट्ट ने, और शानदार प्रदर्शन किया और सुपर ओवर में जीत अर्जित की यूनाइटेड इंपोर्शन नगर। उस तीसरे मुकाबले में सोपोर स्टैलियंस की टीम अब जीत की और अग्रसर। आखिरी गेंद पर रन नहीं आया, ओवर की समाप्ति 12 समाप्त 69 पे 6। स्पेक्ट्रम किंग्स क्रिकेट क्लब 48 गेंदे 140 रन, 8 ओवर में 140 रन बनाने हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए। अजीम काजी 1 ओवर 7 रन 1 विकेट, उमर जहूर की सफलता मिली, वो विकेट उमर जहूर का मिला। आजमत रेशी ने 8 रन बनाए हैं, मोहम्मद मुदस्सिर ने अभी तक 1 रन बनाया है, 1 गेंद का उन्होंने सामना किया है। और देखना होगा 17.50, 17.5 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने हैं इस मैच में। मोहम्मद मुदस्सिर सामने 1 ओवर 7 रन 1 विकेट, गेंदबाजी विशेष अजीम काजी का। और अब जाकर के एक बार फिर परवेज रसूल जो इससे पूर्व 2 ओवर की गेंदबाजी कर चुके हैं, 1 विकेट, अनुभवी गेंदबाज हैं, हर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुके हैं, अनुभव की कमी नहीं है। यह इस मैच में 8 ओवर में 140 रन, मोहम्मद मुदस्सिर 1 पे, अजमत रेशी 8 पे, और परवेज रसूल 1 ओवर लेकर के इस बार पैड लाइन पे। हालांकि ऑन साइड में खेलना चाहते थे पर संपर्क नहीं हुआ, पैड से टकराई ऑन साइड में, वही पास में लुढ़की। 47 से 140, 2.1 ओवर 12 रन 1 विकेट, परवेज रसूल की गेंदबाजी विश्लेषण, वो अनुशासन, वो पैनापन। इस बार ऑफ स्टंप पर नीचे रहती हुई गेंद एक कदम आगे निकाला, उस गेंद तक पहुंचना चाहते थे, हालांकि फुटवर्क वहां पर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा मुदस्सिर का। और ऐसे में एक और डॉट गेंद 69 पे 6, 12.2 के बाद 140 चाहिए 46 गेंदों से परवेज रसूल। एक और डॉट गेंद, लगातार 3 डॉट गेंदे इस ओवर में परवेज रसूल द्वारा। 18.67 रिक्वायर्ड रन रेट, 45 गेंदे 140 रन मैच जीतने के लिए स्पेक्ट्रम किंग्स क्रिकेट क्लब को सोपोर स्टैलियंस के विरुद्ध। मुदस्सिर 1 पे 4 गेंदों से लगातार बड़े स्ट्रोक की तलाश में है। इस पर लेग साइड में 1 रन दौड़ करके पूरा कर लिया, 1 रन और खाते में जुड़ा, और 1 रन के साथ रन संख्या पहुंच गई 70 पे 6, 12.4। और अब जाकर के 44 गेंदों से 139 रन चाहिए परवेज रसूल। 2.4 ओवर 13 रन 1 विकेट, अच्छी गेंदबाजी, पैनापन, किफायतीपन, अनुशासन दिखाया गेंदबाजी में। अच्छा शॉट है पर पीछे फील्डर, और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता दोनों बल्लेबाजों के पास समय था कुछ रन बटोरने का। रन संख्या में वृद्धि 71 पे 6, अंतिम गेंद का आना बाकी 43 से 138।
काफी मुश्किल है ये, आसान परिस्थितियां है नहीं, पर कहां तक पहुंच पाएगी टीम ये देखना होगा। वापस अपने फॉलो थ्रू में वहां पर फील्ड कर लिया, रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं। ओवर की समाप्ति 13 समाप्त 71 पे 6। स्पेक्ट्रम किंग्स क्रिकेट क्लब 7 ओवर में 138, 42 गेंदों से 138, 19.71 रिक्वायर्ड रेट। 209 तक पहुंचना है, 209 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। जेके सुपर सीमेंट रेड प्रीमियर लीग सेकंड एडिशन 2025 प्रेजेंटेड बाय अथवास। 12वां मुकाबला, दूसरी पारी, 138 रन अभी भी चाहिए यहां से। मुदस्सिर ने आज 6 गेंदें के लिए 2 रन। पिछले दोनों मुकाबले स्पेक्ट्रम्स ने हारे हैं। ये तीसरा मुकाबला सोपोर स्टैलियंस के विरुद्ध, और स्टैलियंस का ये पहला मुकाबला इस टूर्नामेंट में, और पहले ही मुकाबले में जीत अर्जित करने की कगार पे। एक आत्मविश्वास आएगा, नई ऊर्जा और उत्साह के साथ अगले मुकाबले में वो उतरेंगे। ये काफी ऊपर हवा में गई है, पीछे फील्डर है पर उनकी पहुंच से बाहर, और गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई। चौका मिलता हुआ 4 और खाते में, और 4 रनों के साथ रन संख्या में वृद्धि। गाजी के विरुद्ध यह चौका अजमत ऋषि के बल्ले से। सुर खिलाड़ी थे लॉन्ग ऑफ पे, पर उनकी पहुंच से बाहर थी ये गेंद। रन संख्या में वृद्धि 134 चाहिए 41 गेंदों से 75 पे 6। अजमत ऋषि पहली गेंद पर चौका, दूसरी गेंद पर फिर बड़ा प्रहार, और एक बार फिर गेंद सीमा रेखा से बाहर। एक और चौका, 2 गेंदों से 2 चौके, और 2 चौकों की मदद से 8 रन बटोर लिया इस ओवर में काजी के विरुद्ध। बड़े प्रहार कर रहे हैं क्योंकि जानते हैं अब इस प्रकार की बल्लेबाजी की आवश्यकता भी है, क्योंकि काफी लंबा सफर तय करना है, और आस्किंग रेट जो है वो करीब करीब 20 तक पहुंच चुका है। तो कोशिश जरूर करनी होगी यहां से स्पेक्ट्रम किंग्स के बल्लेबाजों को, कम से कम जो गेंदों और रनों के बीच अंतर है उसको कम करना होगा। 2 गेंदों से 8 अजीम काजी के विरुद्ध, 79 पे 6, 13.2, 17 पे अजमत ऋषि। मोहम्मद मुदस्सिर ने 2 बनाए, 6 गेंदों का सामना किया। 5.92 का रन रेट इसमें टीम की। बख्शी स्टेडियम ऐतिहासिक मैदान, जेके सुपर सीमेंट रेड प्रीमियर लीग का दूसरा एडिशन खेला जा रहा है। यहाँ पे गेंद सीधे स्टंप से जा टकराई, नीचे रहते हुए बड़ा स्ट्रोक। एक बार फिर खड़े खड़े खेलने का प्रयास किया था, 2 चौके। तीसरी गेंद पर बोल्ड होकर के वापस लौट रहे हैं अजमत ऋषि, और इस प्रकार से एक और विकेट का पतन होता हुआ स्पेक्ट्रम किंग्स क्रिकेट क्लब। मुदस्सिर अनुभवी खिलाड़ी एक छोड़ पे ये नज़ारे देखते हुए, और ये देख लीजिए नीचे रही गेंद, निराश अपने आप से, पर गलत स्ट्रोक। खड़े खड़े खेलने का प्रयास, नीचे रहती हुई ये गेंद, उतना ज़्यादा अतिरिक्त उछाल था नहीं गेंद में। 79 पे 7, 13.3, 39 गेंदें, 130 रनों की आवश्यकता। मोहम्मद मुदस्सिर के साथ अब इम्तियाज अहमद नए बल्लेबाज। नंबर 9 पे इम्तियाज पहुंचे हैं। ये अब आखिरी औपचारिकताओं को पूरा करना है, और देखना होगा इम्तियाज और मोहम्मद मुदस्सिर किस प्रकार से कहां तक ले जा पाएंगे इस पारी को। 209 तक पहुंचना है, 79, 130 चाहिए 39 गेंदों से, और 20 रन प्रति ओवर के हिसाब से यहां से रन बनाने हैं टीम को, तब जाकर के आप इस रन चेज तक पहुंच सकते हैं, पर यह आसान है नहीं। इम्तियाज अहमद नए बल्लेबाज। अजीम काजी 1.3 ओवर 15 रन, मात्र 2 विकेट, और गेंदबाजी बहुत बढ़िया रही है आज। अनुभवी गेंदबाज आपके पास आसिफ रसूल, जीशान जहूर, आसिफ रसूल, ओवेस बाबा, अब बहुत सारे विकल्प आपके पास गेंदबाजी में। 79 पे 7, 130 चाहिए 39 गेंदों से। इम्तियाज शून्य पे, अब नए बल्लेबाज आए अभी अजमत ऋषि के स्थान पर। नंबर 9 पे 79, 7 विकेट पे अजीम काजी। 8 रन खर्चे अब तक, गेंद की पिच तक पहुंचा, अच्छा स्ट्रोक था पर सीधे फील्डर के पास। रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं, एक और डॉट गेंद। 4 गेंदों से 8 रन, 1 विकेट इस ओवर में। 38 गेंदे, 130 रनों की आवश्यकता। इम्तियाज शून्य पे 1 गेंद से। मोहम्मद मुदस्सिर ने 2 बनाए 6 गेंदों से। एक बार फिर 1 रन जरूर मिल जाएगा इस 5वीं गेंद पर, सिंगल मिलता हुआ, और रन संख्या 79 से बढ़कर 80 पे 7। 13.5 आखिरी गेंद होगी इस ओवर की। ये पारी का
14वां ओवर समाप्त होने जा रहा है। अंतिम गेंद 37 गेंदें, 129 रनों की आवश्यकता। मोहम्मद मुदस्सिर सामने 2 पे 6 गेंदें अभी तक खेली है, उनमें क्षमता है बड़े स्ट्रोक की। और पैड पे टकराई, अपील पर स्वीकार नहीं किया रवि कुमार ने। अंतिम गेंद पर रन नहीं आया। ओवर की हो गई समाप्ति, 15 समाप्त, 80 पे 7, 36 गेंदें अभी भी हैं इस मैच में। ये देख लीजिए, पैड पे टकराई थी, अपील हुई पर रवि ने उसको स्वीकार नहीं किया। हालांकि गेंदबाज भी प्रश्न पूछ रहे हैं अंपायर से, पर उन्हें नकारा। और इस प्रकार से 80 पे 7, 129 चाहिए, 36 गेंदों से 3 विकेट सुरक्षित। Just 3 wickets in hand, 80 for 7. They're 1-9 runs behind from 6 overs. They do have 6 overs at their disposal, but the number of runs they require, the asking rate has gone beyond reach. It is impossible now. You can't go 21 each over. You need a miracle to prevail. And yesterday we saw that 36 in an over. You need a couple of overs like that to prevail in today's match. As well, yokes him on that occasion, Zishan Zahoor. Good one to operate. Goes with a full of one. Just a single. Not more than that. Imtiaz and Mohammad Mudassir in the middle. I think a good move to keep himself on strike. We saw a couple of lusty blows in earlier 2 games in the tournament of the batter Mohammad Mudassir. Is he eyeing a couple of big shots here? Will he try to go big? Zishan Zahoor having a word with captain. Now he's got that straightish long off. And the man at wide long off, for the wideish long off, there is going to be Mujtaba at long on. Here is Zishan. Oh, knocked him over. And he's got his man. Mohammad Mudassir got to go. His stay comes to an end. 8th one is down here. And take a look again. He gone with a fuller one. That one is a straight one. It's just like that. You miss, I hit, and I call it. That's it. He's a goner. He's gonna go back to pavilion. It was an O-pitched one. It was asking to be hit, but he misread it completely on that occasion. 81 for 8, 128 runs behind, and that brings Jai Trug. But Trug did bowl in between. I really admire that stuff. Yeah, he's gone for runs, no doubt. But the way he was mixing it up, using those slower ones to perfection against the likes of Adil Katsur and others, that was impressive from Trug. Earlier, now he's got the bat in his hand. He has to look dangerous for a while because they need runs here. Plenty. They need in pockets, in bundlers. They need a complete groove. Not just to improve, but they have to launch big. Are they in a position? I don't think so. What he's going to bring about now? Is he going to use that wide range here? Can he launch big? He can go big once or twice in an over, not more than that. And there is going to be a tough and a tight situation to face. To break free and launch big. 1-8 behind from 34 balls. This is 15th over. Jayed walks in at number 10. Mohammad Mudassir, that stay comes to an end in today's game. He used 8 balls. On other days, we saw some of the quality hits coming off his bat, but today his bat remained quiet. Oh, shown that application of high level on a very first ball. Now it's better to reduce the deficit or to cross that 100-run mark. 8 of them succumb to the pressure and that scoreboard pressure. They need at the rate of 22.59. Oh, does well. Does very well on that occasion, Imtiaz. Spot on. Keeps it away, Imtiaz.
What can Imtiaz do alongside Jai Thrug? At least try to bat as deep as possible. Try to bat through remaining 32 balls. This time there is a shot and up goes the finger. Zishan Zahoor has his one more. That's the third one for Zishan this evening. And it's tonight. And he's picked up one more here. And what a night he's having. Sopore Stallions and Zishan Zahoor. He has his third one. Good call. Good decision there. After pitching, going on to hit middle and leg. That one packs back in and he has to go. It's wicket number 9 down. 82 for 9 now. Zishan, the left arm spinner, with a ball to go. He's got a ball. Is it going to the final ball of the match? Of the run chase? Let's wait and watch. Let's see which way the ball is going to go. Fazullah walks in at 11. 5 wicket haul in this tournament. Fiffer under his belt. And in today's game he was again impressive with the ball. He bowled some quality lines. Sultanpur has lost their game today. That is the second one on the trot. Look at Mujtaba. He goes across and hugs Fazullah Dar, telling him that you are a talented lad. You can go a long way. Fazullah, a quality spinner. Little smile and is marking the fresh guard. Oh look, Ahmed Pandey is telling him what is that celebration. And I think he's asking him what does it mean. And I think it's called the ninja celebration, or the one who knows the Kung Fu very well. Well, it's about those skills that we call the karate. 82 for 9. The last ball of over number 15 is going to come. Ahmed in slip cotton. Fazullah survives. And Zishan is done with his quota 4 overs. 3 for 28. Good figures. In today's game, he's going to walk with away. There's something special and something to celebrate. 3 wickets for 28. 15 overs done. Over number 16 is about to start. Thrug will take strike. He will keep the strike. Thrug, there is a message towards his dugout. Who's going to walk in now? He's asking for something. This is J.K. Super Seamen, Red Premier League Season 2. It's game 12. Being played between Spectrum Kings Cricket Club and Sopore Stallions. Soporeans batted first. They finish on 208. Setting 209 for chase. In response, Spectrum lost to that Spectrum, that variety. And 9 of them gone back to hut. One man, that was Zishan Zahoor, who shown those applications, the stature of highest level, and batted for quite some time, scoring some runs. And they were quality shots coming off his bat in today's game. Now Mujtaba is having a word with Jahid and Fazullah there. Mujtaba very friendly with opponent players. That's a good sign. He's going to bowl from other end now. He's going to bowl from northern pavilion end. He started from southern pavilion end. The end changed. 2 overs, 1 wicket, and he conceded 7 runs. One, 2, 7 runs behind from 30 balls. 1 wicket away from big win. Sopore Stallions, coming from Apple Town of Sopore. This team has brought in a variety. The international icon is captaining the side. Works it away nicely. Mujtaba in search of one more here. Is he going to wrap it up? They should try here to wrap it up. It will take some time to wrap up the tail.
Jahid gives it to Fazullah. Jahid Rag coming from that place of thrall. The 1-2-6 runs behind from 29 balls. Never going to be easy. Tough one, tight one. An impossible one now. 9 for 83. Fazul on strike. Trying to go full. He's on money, on target there. Parvez Rasool passed on few comments. A little smile, a very smile from Fazullah. Fazullah Dar yet to open his account. Mujtaba generating pace here. His team is in again. Banged in short. The ploy is clear. He's going to threaten the bat. And Parvez Rasool is telling Fazullah, do something. Come on, hit the ball. And Fazullah all smiles. What can I do? The one that was a kind of a yorker into the block hole. The next one is banged in short. He hits the deck hard. 83 for 9. The last ball of over number... Oh no, it's the ball number 4 of over number 16. That one, it says low. Look, the variation in this over. One, we saw that into the block hole. The next one, that banged in short. The next one, he pitched it halfway mark. But it keeps low. Nice mix up. The one he pitched around that halfway mark that was climbing, and that did climb around that head high or neck high. But the next one, it stays low. That one, it was a well directed one. And Fazullah is lucky. He survives. Look at the smile from Mujtaba, as he's lucky that he gets away with that one ball, eluding stumps. The last one is going to come of over number 16, 9 for 83. Fazullah is standing his ground there. He's not going to give up. And ball did deviate a bit. Ball changed its orientation. A dot to end the over number 16, 9 for 83. 16 समाप्त 83 9 विकेट पे फैजुल्ला डार 6 गेंदों का सामना किया, खाता नहीं खोल पाए और अभी भी अभिजीत हैं। जाहिद दराग ने 2 रन बनाए हैं, 2 गेंदें खेली हैं। आखिरी औपचारिकताएं पूरी करने या आखिरी जोड़ी समय बीच मैदान में स्पेक्ट्रम किंग्स क्रिकेट क्लब की 83 पे 9, 126 चाहिए 4 ओवर में। और ऐसे में अब देखना होगा क्या इस ओवर में इस पारी को समेटा जाएगा या यहाँ पर इस पारी को समाप्त कर देंगे, ये देखना होगा। ओवेस बाबा ने 2 ओवर में 4 रन 1 विकेट, असल में वो गेंदबाजी करेंगे। 16 के बाद 83 पे 9, 12वां मुकाबला, दूसरी पारी, अंतिम 4 ओवर का खेल और आखिरी जोड़ी स्पेक्ट्रम किंग्स क्रिकेट क्लब की जेके सुपर सीमेंट रेड प्रीमियर लीग सेकंड एडिशन 2025 प्रेजेंटेड बाय अथवास। आखिरी 4 ओवर 24 गेंद 126। जाहिद दराग सामने, पहली गेंद फुलर लेंग की ऑन साइड में, एक सिंगल मिल जाएगा, 1 रन और खाते में और 1 रन के साथ 84 पे 9, 125 चाहिए 23 गेंदों से। फैजुल्ला डार अब सामने, जिन्होंने अभी तक खाता नहीं खोला है, 6 गेंद उन्होंने जरूर खेली है। लगातार बातचीत परवेज रसूल की साथी फील्डर्स के साथ, साथी खिलाड़ियों के साथ। और ओवेस बाबा क्या इसी ओवर में इन 5 गेंदों में इस पारी को समाप्त कर देंगे? कोशिश जरूर होगी इस आखिरी जोड़ी को यहां समाप्त कर दिया जाए, इस आखिरी बल्लेबाज को आउट कर दिया जाए। बाबा चले एक बार फिर इस ओवर में, वो वापस खेला बॉलर की दिशा में, तो पीछे फील्डर है पर सुरक्षित पहुंच गए, एक सिंगल पूरा कर लिया, 1 रन और। अब जाकर के 7वीं गेंद पर फैजुल्ला डार का खाता खुला, 7 गेंदों से 1, 3 गेंद से 3 जाहिद दराग, 124 चाहिए 22 गेंदों से 85 पे 9, 17वां ओवर 16.2। आज इनके पहले मुकाबले में सुल्तान को हार का सामना करना पड़ा अथवास इंडिया 11 द्वारा। दूसरे मुकाबले में सुपर ओवर में यूनाइटेड इंपोर्ट्स ने जीत अर्जित की जीडी टाइटंस को हरा करके, और तीसरे मैच में सोपोर स्टैलियन की टीम जीत के बिल्कुल करीब, ये बाहरी किनारा, एक और सिंगल मिल जाएगा यहां पर दोनों बल्लेबाजों को। रन संख्या 85 से बढ़कर 86,
9 विकेट पे। फैजुल्ला डार एक सामने 7 गेंदों से। तो दूसरा जो मुकाबला रहा आज के दिन का, उसमें सुपर ओवर तक वो मुकाबला पहुंचा, जहां ग्लोबल डर्डू टाइटंस को हार का सामना करना पड़ा। यूनाइटेड इम्पोर्ट्स ने तीसरा लगातार वो मुकाबला जीता और मात्र एक मुकाबला इस प्रतियोगिता में उनका बचा है लीग की अगर हम बात करें। और इस तीसरे मुकाबले में सोपोर स्टैलियंस अब जीत के बिल्कुल करीब, 123 रन दूर स्पेक्ट्रम किंग्स पर आखिरी जोड़ी। और इस बार बल्ले के निचले सिरे पे लगने के बाद अंदर की तरफ आई, पर भाग्यशाली रही कि गेंद स्टंप से नहीं टकराई, नहीं तो यहाँ काम तमाम हो सकता था। अभी भी सुरक्षित हैं फैजुल्ला डार और उनके साथ जाहिद तराग। 20 गेंदे 123 चाहिए जीत के लिए, 16.4 में 86। पहली पारी में 84 रनों की पारी खेली अहमद बांडे ने, और फिर 40-45 रनों की पारी शुरुआत में फयाज सरवर ने, आसिफ रमजान ने अंत में कुछ पारी खेली, पर यहां अंत होता हुआ पारी का सीधे स्टंप्स पे बोल्ड हो गए यहां पर। और ये पारी 86 पे सिमट गई। 16.5 ओवर में 122 रनों से ये मुकाबला जीत लिया है सोपोर स्टैलियंस ने, और जीत के साथ जेके सुपर सीमेंट रेड प्रीमियर लीग के दूसरे एडिशन में अर्जित की है जीत और शुरुआत की है। और इस प्रकार से ये शुरुआत इस मैच में सोपोर स्टैलियन की इस प्रतियोगिता में जीत के साथ 122 रनों से इस मुकाबले को जीत लिया है। अच्छी शुरुआत, बेहतर जीत, बड़े मार्जिन से। और ये जानकारी देते हुए मैं शेख नज़ीर साथी कमेंटेटर मनोवर तनवीर के साथ वापस जेके स्पोर्ट्स टाइम के स्टूडियो लिए चलता हूँ। इस उम्मीद के साथ नहीं जुड़ेंगे आपके साथ कल के दिन। दीजिएगा विदा, अल्लाह ने के बाद, अस्सलाम वालेकुम।